timeless wisdom of our classical text with scientific validation required in the modern era. Ayurveda is not merely a traditional healing science, it is a living, evolving system, and through research and evidence based practice, we strengthen its global relevance and credibility. We will start our day with Dhanvantari Stavan. I request everyone to stand their places and play to Lord Dhanvantari. I like to call Reed Bias for Dhanvantari Stavan. नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरार्सुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलोकां दधत अमृतघटं चारुदुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छति रुद्रांशुक परिविलसत मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविल सच्चारु पीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलम् ॐ श्री धन्वन्तरये नमः। Thank you, Rit, for your melodious voice. To begin today's academic deliberations, we move to our first session focusing a very crucial and practical dimension of Ayurveda, Ayurveda in acute emergency. In today's fast-paced clinical scenario, emergency management is considered the forte of modern medicine only. But Ayurveda too possesses strong principles and formulations that start and manage acute conditions equally, effectively when applied with proper knowledge and skill. And to enlighten us on this significant topic, we are privileged to have an eminent speaker with us, Dr. Anuj Jain sir. I now request Dr. Poonam Fuladi ma'am to escort Vaidya Anuj Jain sir. It is my privilege to introduce our respected speaker, Vaidya Anuj Jain sir. Sir is BMS MD from Karnataka, disciple of respected Vaidya Samir Zamadagni sir, a dedicated Ayurvedic physician trained in the traditional Gurukul system, associated with Shri Vishwadhyas Ayurvedic and Panchakarma Hospital, Gwalior, Madhya Pradesh. Dr. Jain sir is known for his deep classical understanding blended with practical clinical expertise. His commitment to preserving authentic Ayurvedic knowledge while applying it in contemporary clinical practice makes him a true torchbearer of evidence-based Ayurveda. Sir has delivered 300 plus seminars and lectures in major cities. Sir has established the Ayurvedic principle of Shvasanak Sannipata in COVID-19. During the COVID-19 pandemic, Sir successfully managed severe and ICU cases using Ayurvedic protocols and cases, published clinical work in reputed journals. Sir is recipient of multiple awards, including Excellence Service Award, Charak Award, Ayurveda Prabhakar Award, and Acharya Drudabal Young Vaidya Award, and continues to work towards establishing Ayurveda in the field of emergency and critical care medicine. Sir, we have truly honored to have you among us today. I now request Vaidya Anuj Jain sir kindly take over the session.
हेलो हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं वैद्य अनुज जैन, ग्वालियर से। सबसे पहले आयुर समग्र की पूरी टीम, नश्या और सभी ऑर्गेनाइजर्स को थैंक यू, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, बुलाया। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन आयुर्वेद। बेसिकली जब हम यूजी, पीजी, कुछ भी ग्रेजुएशन कर कर निकलते हैं तो एक मार्केट में जब हम जाते हैं, ग्राउंड पर जब वर्क करते हैं, तो एक प्रॉब्लम सामने आती है और कहा जाता है कि आयुर्वेद से इमरजेंसी को मैनेज या ट्रीट नहीं किया जा सकता। यही बात मुझे 2007 में आफ्टर यूजी कंप्लीशन के बाद पता चली। मैंने इस चीज को टास्क बनाया, इस सब्जेक्ट को मिशन बनाया और उस पर मैं आज 15 सालों से काम कर रहा हूं। शुरुआत छोटी छोटी बीमारियों से की, लेकिन आज हम आईसीयू के वेंटिलेटर पेशेंट्स को मैनेज करते हैं, उन पर डील करते हैं और पूरे भारत के किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाकर उनकी ट्रीटमेंट करने की कैपेसिटी हम रखते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे केसेस के बारे में देखेंगे जो कितने ज़्यादा क्रिटिकल थे और कैसे आयुर्वेद की चिकित्सा से, आयुर्वेद प्रोटोकॉल से उनको हम बाहर ला पाए। इस चीज़ को आज हम देखेंगे। सबसे पहले, जैसा परंपरा है, मैं वैद्य समीर जमदग्नि सर का स्टूडेंट हूँ, तो सबसे पहले उनको नमन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखेंगे हम पहला केस, क्योंकि मैंने कुछ केसेस ही सिलेक्ट किए हैं आपको दिखाने के लिए, टाइम कम होने के कारण। तो 2018 में मेरे पास एक केस आया और केस था ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। बेसिकली ये जो एरा है, इस एरा में कोविड नहीं आया था, तभी कोविड से पहले की बात है। लेकिन ये केस जब आया और पेशेंट 3 हॉस्पिटल्स के आईसीयू चेंज कर चुका है। इंदौर के अंदर पेशेंट एडमिट है और 3 हॉस्पिटल्स पेशेंट के चेंज हो चुके हैं। पेशेंट वाज ऑन मैकेनिकल वेंटिलेटर एट द टाइम ऑफ कंसल्टेशन। लेकिन कंसल्टिंग डॉक्टर्स जो उनको ट्रीट कर रहे थे, उनको यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये ARDS जो है पेशेंट को किस कारण से हो रहा है, इसका कॉज क्या है। इट मे बी बैक्टीरियल, इट मे बी फंगल, इट मे बी वायरल, इट मे बी प्रोटोजोअल। किस कारण से इस पेशेंट को निमोनिया डेवलप हुआ है, और उसको सारी दवाइयां जो दी जा सकती थी कन्वेंशनल साइंस के, वो दी गई। एंटीबैक्टीरियल्स भी दिए गए, एंटीवायरल्स भी दिए गए। और ये उस समय स्वाइन फ्लू को थोड़ा पहचाना जाता था, उस समय स्वाइन फ्लू के केसेस आते थे। तो ये सब देखते हुए पेशेंट को स्वाइन फ्लू के लिए जो टेमी फ्लू नाम की दवा होती है वो भी दी गई, स्टीरॉइड्स भी दिए गए, जो जो हो सकता था सब किया गया। तो जब हम एविडेंस की बात करते हैं तो हम एविडेंसेस को बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, आफ्टर एंड लॉन्ग टर्म फॉलोअप में देखते हैं कि भाई पेशेंट को हमने ट्रीट किया, पेशेंट रिकवर हुआ, कब तक रिकवर रहा, कितने समय तक रिकवर रहा और उसकी लॉन्ग टर्म इफिकेसी कितनी रही। तो यहां शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि ये पेशेंट जब हमारे पास आने से पहले एडमिट था और पेशेंट कैसे धीरे धीरे डिटोरिएट होता गया इन द हॉस्पिटल, डिटोरिएट होता गया। और डिटोरिएट होते होते पेशेंट की क्या स्थिति हुई। ये चेस्ट एक्सरे हम देख रहे हैं, यहां पर हम देखेंगे राइट लोअर लोब में आपको यहां पर ओपेसिफिकेशन दिख रहा है। दैट इज नॉर्मल, हम देखें तो इसको निमोनिया कंसीडर कर सकते हैं। ओपेसिफिकेशन दिख रहा है यहां पर। जिनको समझ में नहीं आए उनके लिए मैं बताऊं, जहां पर भी व्हाइट आपको एरिया दिख रहा है दैट इज इन्फेक्शन, वहां पर उसको इन्फेक्शन है, जिसको हम ओपेक एरिया बोलते हैं, ओपेसिफिकेशन बोलते हैं। कंसोलिडेशन बाद में दिखाई देता है, तो यहां देखेंगे। लेकिन ये पहले के एक्सरे हैं जब पेशेंट एडमिट है, चेस्ट एक्सरे। उसके बाद देखेंगे, ये उसके बाद का है, पेशेंट डिटोरिएट हुआ और यहां पर राइट लोअर लोब से मिडिल लोब की तरफ भी इन्फेक्शन गया। तो ये पेशेंट डिटोरिएट हुआ यहां पर, और जब हमारे पास आया तो इस कंडीशन में पेशेंट था, इन्होंने अप्रोच किया। यहां हम देखेंगे कि पूरा राइट मिडिल लोब और लोअर लोब में इन्फेक्शन है और कुछ लेफ्ट लोअर लोब में भी इन्फेक्शन है। दिस टाइम पेशेंट ऑन वेंटिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेटर पर है इस समय पेशेंट। और ये वो स्थिति है जहां पर पेशेंट को बता दिया गया है कि अब बचने की उम्मीद नहीं है। दैट इज द
डिक्लेरेशन कि अब यहाँ पर नहीं बचा सकते पेशेंट को, आप बुला लीजिए, दिखा लीजिए जिसको भी मिलना है, लास्ट जो मिनट्स होते हैं उसके लिए। वहाँ पर ये केस हमारे पास आया। मतलब ये है कि हम जब आयुर्वेद से ट्रीट करते हैं, आयुर्वेद का जो हम स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हमें ये समझना है कि हमारी मेडिसिन कितनी फास्ट एक्टिंग है यदि हम राइट डायग्नोसिस अप्रोच करते हैं। प्रॉब्लम होता है कि हम राइट डायग्नोसिस अप्रोच नहीं कर पाते हैं, इसके कारण हमें समझ में नहीं आता है कि मेडिसिन काम क्यों नहीं कर रही है। तो राइट डायग्नोसिस अप्रोच करने के तरीके क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ हम देख पाएंगे इस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास अप्रोच होती है और विद इन 2 डेज देखेंगे, ये उसके पहले का चेस्ट एक्सरे देख लेते हैं कि एक्सरे में क्या चेंजेस आ गए। तो विद इन 2 डेज ये एक्सरे हमारे सामने आया और पेशेंट 2 दिन के अंदर हमने वेंटिलेटर फ्री कर दी। आप देखिए पेशेंट दूसरे सेकेंड डे पेशेंट वेंटिलेटर फ्री है विद द प्रोटोकॉल, सिंपल प्रोटोकॉल ऑफ आयुर्वेद, बट डायग्नोसिस इज क्रूशियल। हमने क्या दिया ये देख लेते हैं। बहुत सिंपल सी ट्रीटमेंट दी है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई हिमालय जाना है और दवाइयां लेकर आना है। हर कोई कर सकता है यदि आपको करना है और राइट डायग्नोसिस अप्रोच करते हैं। तो हमने यहाँ पर रस सिंदूर, लघु मालिनी बसंत, आरोग्यवर्धिनी, विषाणु भस्म, 1 ओवरली। तो सबसे पहले एक प्रश्न आता है कि आयुर्वेद में इमरजेंसी के कॉन्टेक्स्ट कम मिलते हैं, ऐसे कई लोग मुझे अप्रोच करते हैं और पूछते हैं। ऐसा नहीं है, जहां जहां पर भी कम से कम 100-150 जगह पर सद्या शब्द आया है जब हम पढ़ेंगे तो सद्या फलदायक है, सद्या फल देता है, ऐसे जहां पर शब्द आए हैं वो सब इमरजेंसी की बात हो रही है। और यहां हम देखेंगे तो हमने यहां पर जो हमारी मेन काम करने का तरीका है वो है पेशेंट को मुहुर मुहुर औषधि पान। तो जब हम इमरजेंसी की बात करें तो हमें मुहुर मुहुर औषधि पान के बारे में बात करनी है। ऐसा नहीं है कि दिन में 1 बार 2 बार 3 बार आपने दवा दे दी और पेशेंट रिकवर हो जाएगा, नहीं होगा। दोषों की बहुलता जितनी ज्यादा है, दोष जितने ज्यादा हैं, उतनी हमें औषधि की आक्रामकता भी बढ़ानी पड़ती है। आईसीयू में जब हम काम करते हैं तो देखा होगा आपने, कभी आईसीयू में आप देखेंगे तो पेशेंट का यदि बीपी फॉल हो रहा है तो पंप से दवाइयां दी जाती हैं। एक पंप सेट कर दिया जाता है, इन्फ्यूजन पंप बोलते हैं उसको, उसमें कोई दवा को डाल दिया और वो धीरे 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 कंटिन्यूअसली देते हैं। तो दैट इज ऑल्सो मुहुर मुहुर औषध पान। तो दैट इज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड इन आयुर्वेद कि मुहुर मुहुर औषध पान देना है। अब हम कैसे दें मुहुर मुहुर औषध पान? तो हम देते हैं बाय द राइल्स ट्यूब। राइल्स ट्यूब से कभी हम हाफ ओवरली मेडिसिन देते हैं, कभी 1 ओवरली देते हैं, कभी 2 ओवरली देते हैं, लाइक दैट। तो हमें यहाँ पर औषधि की मात्रा ज्यादा मात्रा में देनी होती है और बार बार देनी होती है। ऐसा नहीं कि एक डोज हमने बड़ी मात्रा में दे दिया पेशेंट को, 500 mg सिंदूर दे दिया, ऐसा नहीं। फ्रिक्वेंटली और बार बार औषधि को हमें एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है, तब ये पेशेंट इस तरीके से बाहर आ जाते हैं। इनको हमने 1 ओवरली मेडिसिन दी है। 1 ओवरली मेडिसिन का मतलब हो गया कि हमने इनको 12 बार 12 घंटे लगातार दवा दी है। रात में दवा नहीं देते हैं, रात में मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते हैं यदि मॉर्निंग में हमने शुरू कर दी है। तो नियर अबाउट 12 डोजेस पेशेंट को फ्रिक्वेंटली हमें देने होते हैं। जैसे जैसे पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है, जिस प्रकार से पेशेंट आगे बढ़ता है, उसमें वाइटल्स में इंप्रूवमेंट आना शुरू होता है, वहां पर हम मेडिसिन को डोजेस को कम करते जाते हैं। जैसे अभी 1 ओवरली है, 2 दिन के बाद जब पेशेंट रिस्पॉन्ड कर गया तो हमने यहाँ पर 2 ओवरली किया, फिर 3 ओवरली किया, फिर 4 ओवरली किया, इस प्रकार से करते हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि भाई इतनी ज्यादा मात्रा में दवाई देने से पेशेंट को भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, या सो कॉल्ड भस्मोफोबिया या मेटलोफोबिया। तो ये एक हमारे दिमाग में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बात को गलत तरीके से पोर्ट्रे कर दिया गया है और जिससे हम सब डरते हैं। मैं अभी उसके बाद के केसेस में आपको दिखाऊंगा कि ऐसा बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है आपको, और इमरजेंसी में ऐसे केसेस को कैसे रिकवर करते हैं। तो ये आपने केस देखा, कितनी ये बच्ची जब हमने ट्रीट की तो हमें नहीं मालूम था ये पेशेंट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की भी है। आफ्टरवर्ड्स हमें पता चला जब हम ट्रीट कर चुके थे कि ये पेशेंट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की भी है। पेशेंट नॉट रिस्पॉन्डिंग एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। वहां पर सिर्फ रस सिंदूर का योग काम करता है, और ये योग कोई मेरा नहीं। आप देखेंगे तो रस तंत्र सार में बहुत क्लियरली इसके बारे में लिखा गया है। एज इट इज योग को हमने उठा कर दिया, दैट इज टेक्सचुअल।
लेकिन हम इसको इंप्लीमेंट कैसे कर पाते हैं? क्योंकि हम इस पर काम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि कौन सी मेडिसिन कितने डोज में कब देनी है, कितने समय तक देनी है, ये हमें आइडिया होता है। दूसरी केस की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि टाइम कम है तो हम जल्दी जल्दी से केसेस को लेते हैं। 79 ईयर फीमेल, केस क्या है? मल्टी ऑर्गन फेल्योर। तो वी आर डीलिंग इन मल्टी ऑर्गन फेल्योर केसेस, जहां पेशेंट के सारे ऑर्गन्स, 2, 3, 4 ऑर्गन्स फेल्योर में चले गए हैं, ऐसे केसेस को हम डील कर रहे हैं। तो यहां देखेंगे मल्टी ऑर्गन फेल्योर में क्या है? रेस्पिरेटरी फेल्योर विथ किडनी फेल्योर विथ कोमाटोज। जब हमारे पास केस आया, इस कंडीशन में केस था, तो अब यहां पेशेंट को किडनी फेल्योर है, पेशेंट को यहां कोमाटोज है, मतलब सीएनएस इन्वॉल्वमेंट है, और रेस्पिरेटरी, तीन यहां पर इन्वॉल्वमेंट हमें दिख रहे हैं। नॉन केस ऑफ डायबिटीज हाइपरटेंशन सिंस 5 इयर्स पेशेंट को। अब होता क्या है, थोड़ा सा इसका हम हिस्ट्री बताएंगे आपको। तो जब पेशेंट एडमिट हुआ, तब पेशेंट को किडनी फेल्योर नहीं था। तो यहां से ही शुरुआत होती है मेटलोफोबिया की। तो जो लोग बोलते हैं कि मेडिसिन देने से, आयुर्वेद की दवाइयां देने से किसी किसी पेशेंट को, या बहुत सारे लोग तो अवॉइड ही करते हैं, तो आज मैं यहां से क्लियरली इस बात को संदेश देना चाहता हूं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और नए ग्रेजुएट्स, बिल्कुल मत डरना, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एविडेंस दिखा रहा हूं, मैं आपको केसेस दिखा रहा हूं जो आपको एक्चुअल विजन देंगे कि हाँ इट इज पॉसिबल, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो पेशेंट जब एडमिट हुआ, तो बेसिकली इन्होंने जो मुझे अप्रोच किया, वो अप्रोच इसलिए किया कि पेशेंट जो कंडीशन थी वो इस कंडीशन में था पेशेंट। मैं आपको दिखाता हूं। अगेन, पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेटर एंड चेस्ट एक्सरे, आप देखें पेशेंट का कितना पुअर है, देख पा रहे हैं? उससे जो हमने फर्स्ट केस दिखाया उससे 10 गुना नेक्स्ट लेवल पर है। अब जब ये केस हमें अप्रोच किया, तो उन्होंने अप्रोच किया कि सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो कंसल्टिंग डॉक्टर हैं उन्होंने बोला है कि पेशेंट को हम इसलिए वेंटिलेटर फ्री नहीं कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है पेशेंट, क्योंकि पेशेंट की किडनी रिवाइव नहीं कर रही है। किडनी स्टेटस देखेंगे अब हम। यूरिया वाज 245, क्रेटिनिन वाज 5.7। अब यहां पर पिक्चर देखेंगे हम कि पेशेंट जब एडमिट था तब उसको किडनी फेल्योर था क्या? नहीं था। विद द टाइम एडमिटेड इन हॉस्पिटल, विद दैट ट्रीटमेंट, पेशेंट गॉट acute kidney injury due to higher antibiotics। क्या हुआ? पेशेंट जब एडमिट था, उसको जो रेस्पिरेटरी फेल्योर हुआ, उसके लिए उसको जो दवाइयां दी गई, वेंटिलेटर पर लिया गया, और उसके कारण उसमें जो दवाइयां दी जाती हैं उनके क्रिएटिनिन क्लियरेंस कम होते हैं, उससे क्रिएटिनिन क्लियरेंस कम हो जाता है, और उसके कारण पेशेंट कहां गया? किडनी इंजरी, अक्यूट किडनी इंजरी में गया पेशेंट। अब यहां पर डॉक्टर का कहना था कि साहब हम इसको बाहर तो निकाल लें, लेकिन पेशेंट की किडनी काम नहीं कर रही है, इसलिए हम बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं पेशेंट को। तो हमें जो अप्रोच किया गया वो इसलिए किया गया, सर आप सिर्फ किडनी का इलाज कर दो, क्योंकि हमने आपका नाम सुना है कि आप किडनी ठीक कर देते हो। डॉक्टर ने ये बोला तो हम वेंटिलेटर से बाद में निकाल सकते हैं, क्योंकि पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं, यूरिया 245, क्रेटिनिन 5.7, दैट इज आफ्टर 5 हीमोडायलिसिस। 5 हीमोडायलिसिस होने के बाद में यह स्टेटस है कि पेशेंट रिकवर ही नहीं कर रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग। बस वहीं पर आयुर्वेद की याद आती है लोगों को, और हम उपस्थित हो जाते हैं सेवा में। तो हमने यहां पर केस ले लिया और पेशेंट को रिकवर कर दिया। किस चीज में रिकवर कर दिया? सिर्फ किडनी में। मैंने कहा 3 दिन में आपका काम हो जाएगा। ये देखिए, यूरिया 245, क्रेटिनिन 5.7, आफ्टर ओनली 2 days विदाउट एनी डायलिसिस। हमने कोई डायलिसिस एडवाइज नहीं किया उनको, ना होने दिया। यूरिया 146, क्रेटिनिन 1.9, एंड आफ्टर 10 days ऑफ ट्रीटमेंट यूरिया वाज 28, क्रेटिनिन 1.1। अब ये काम तो हमने 3 दिन में कर लिया, राइट? अब 3 दिन के बाद भी पेशेंट वेंटिलेटर फ्री नहीं हो रहा है। किडनी तो हमने रिवाइव करा दी पेशेंट की, क्योंकि उनको यही बोला गया था कि आपकी यदि किडनी रिवाइव हो जाती है पेशेंट की, तो हम पेशेंट को यहां से बाहर निकाल सकते हैं।
तो पेशेंट खुश, पेशेंट के रिलेटिव्स खुश हो गए कि भाई ये काम तो हो गया, अब हम निकाल लेंगे। लेकिन उसके बाद भी पेशेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया और अगेन पेशेंट वेंटिलेटर फ्री या कोमाटोस कंडीशन से बाहर नहीं आ पा रहा था। देन दे अगेन कंसल्ट टू मी कि सर प्रॉब्लम आ रही है अभी भी, अब आप ही कुछ करिए। मैंने कहा ठीक है, ये काम भी हम कर देते हैं। और फिर हमने पेशेंट को ये ट्रीटमेंट दिया। तो मैं ट्रीटमेंट आगे दिखाऊंगा आपको कौन सा कब दिया। और दिस वाज द कंडीशन एंड आफ्टर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। हेलो हेलो, ऑडिबल? ओके। और ये पेशेंट फ्री फ्रॉम मल्टी ऑर्गन फेल्योर। और जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तब भी ये पेशेंट स्वस्थ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम पेशेंट को सिर्फ ट्रीट नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म फॉलोअप में रखते हैं कि पेशेंट के साथ क्या हुआ, और उसके एविडेंसेस को हम बाद में पब्लिश भी करते हैं। तो दिस वाज पेशेंट। तो जब हमारे पास पेशेंट ने फर्स्ट टाइम अप्रोच किया रिलेटिव ने, तो हमने क्या दिया फॉर किडनी फेल्योर, अक्यूट किडनी फेल्योर। तो दिस इज अ ट्रीटमेंट, बृहद चिंतामणि 125 mg दिन में 3 बार, टीडीएस, अर्क मकोए, अर्क काशनी, अर्क पुनर्नवा 20 ml दिन में 3 बार, स्वर्ण सूत शेखर रस दिन में 2 बार बीडी के डोजेस में। सिर्फ इतनी ही दवा हमने 3 दिन दी है और पेशेंट की किडनी इंजरी रिवर्स हो गई। जो डायलिसिस के साथ काम नहीं हो रहा था वो इस दवा ने काम कर दिया। दिस इज द पावर ऑफ आयुर्वेद। अब हमको लगता है कि हर जगह ना ऐसे ही करने से काम बन जाएगा, नहीं। दिस इज नॉट ए ट्रीटमेंट ऑफ रीनल फेल्योर, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ रीनल फेल्योर ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस। जिस कारण से रीनल फेल्योर हुआ उसका हमने यहाँ पर ट्रीटमेंट किया है। और बृहद चिंतामणि मेरी फेवरेट ड्रग है इन इमरजेंसी। मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे उसको उपयोग करना होता है। लेकिन ये ट्रीटमेंट मैं ये बताना चाहता हूँ, दिस इज नॉट फॉर किडनी फेल्योर, दिस इज फॉर इन दिस केस ओनली। ये इस केस के लिए है जो हमने ट्रीटमेंट दिया। और उसके बाद ही 2 दिन में देखिए यूरिया 146 हुआ, क्रिएटिनिन 1.9 हुआ। और इंटरेस्टिंग बात है कि 5 डायलिसिस के बाद हमने कोई दूसरा 6 डायलिसिस नहीं होने दिया पेशेंट का, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। और पेशेंट वेंटिलेटर फ्री होकर, कॉन्शियस होकर घर पर पहुंच जाता है। दिस इज द पावर ऑफ आयुर्वेद। सेकेंड टाइम जब हमने ट्रीटमेंट शुरू किया तब हमने पेशेंट को यह योग दिया था। उसमें हीरक भस्म, महालक्ष्मी विलास रस, सतपुटी अभ्रक, चंद्रामृत रस, सितोपलादी, ये कॉम्बिनेशन था। और इसको हमने 2 ओवरली दिया है यहाँ पर, इस योग को 2 ओवरली। ये डोज सिंगल डोज नहीं है, ये फुल मात्रा है। और अर्क मकोए, कासनी, पुनर्वा हमने यहाँ पर शुरू रखा है। अब ये योग जो आया रेस्पिरेटरी फेल्योर का, तो हम जिसके पहले जो काम कर चुके हैं, उसके बाद हमने कोविड में जितने भी रेस्पिरेटरी फेल्योर के पेशेंट वेंटिलेटर पर थे, निमोनिया के पेशेंट्स थे, उन सबको हमने इस योग से रिकवर किया है। और पहली बार पूरे भारत में, वैसे तो पूरे विश्व में पहली बार हमने ट्रीटमेंट किया जिसमें श्वसनक सन्निपात, कफ प्रदान श्वसनक सन्निपात का सिद्धांत दिया और उसको पब्लिश भी किया। पहला एक ही केस है, केस पेपर है जो हमने सीरीज में पब्लिश किया, गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं, जिसमें सीवियर कोविड केसेस को ट्रीट किया हुआ है हमने। वहां आप एविडेंसेस देख पाएंगे। और सीवियर कोविड पर तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको जिसमें मेडिसिन दी गई, लेकिन इमरजेंसी के केसेस जो हैं, सीवियर कोविड केसेस जो हैं, वेंटिलेटर केसेस जो हैं, हमने वहां पर पब्लिश किए हैं। दिस इज
केस फ्रॉम योर नागपुर। ये इसलिए यहाँ पर लिया है हमने क्योंकि हम नागपुर में ही खड़े हैं, तो यहाँ का ही हम आपको केस दिखा रहे हैं। ये डॉक्टर घाड़े जी थे, एज 54 ईयर। अब ये केस देखिए, अगेन मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से चीजों को डिटोरिएशन होता है, इस बात को हम समझेंगे पहले। पेशेंट ब्रेन ब्लीड हुआ, सेरेब्रल हेमरेज हुआ, फिर पेशेंट रेस्पिरेटरी फेल्योर में गया, मैकेनिकल वेंटिलेटर पर गया पेशेंट क्योंकि कॉन्शियस नहीं थे, और फिर पेशेंट स्लोली किडनी फेल्योर में गए। अगेन पेशेंट इन मल्टी ऑर्गन फेल्योर। अब यहां देखेंगे हम कि पेशेंट कितने समय से कितने समय तक वेंटिलेटर पर थे। 1 जनवरी 2024 से लेके 26 जनवरी 2024 तक नियर अबाउट 26 डेज पेशेंट जो है वेंटिलेटर के ऊपर है और उसको बाहर निकालने के लिए कोई उपाय नहीं है। पेशेंट नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। 27 जनवरी 2024 को आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोटोकॉल शुरू किया जाता है और 31 जनवरी 2024 को वेंटिलेटर को हम बीन ऑफ करने में सक्सेसफुल होते हैं। ये पावर देखिए आप आयुर्वेद की। लेकिन कंडीशन क्या थी? यूरिया वाज 201, क्रिएटिनिन 3.4। अगेन मैं फिर दिखा रहा हूं आपको कि जो पेशेंट डिटोरिएट करते हैं, जिनको पेशेंट को हायर मेडिसिन दी जाती हैं, वो पेशेंट कैसे मल्टी ऑर्गन फेल्योर में चले जाते हैं। और जो लोग भस्मों को, रस शास्त्र को बार बार कोसते हैं, उनको मैं ये दिखाना चाहता हूं कि देखिए कैसे मेडिसिन किडनी को रिवर्स कर रही हैं। यदि वो फेल करती तो यहां से और ज्यादा प्रोग्रेशन होना चाहिए था, डिटोरिएशन होना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी मेडिसिन लाइफ सेविंग्स हैं, वो लाइफ को बचाती हैं। ये गलत मैसेज हमारे दिमाग में डाल दिया गया है। मैं बिल्कुल आप लोगों को ये दिखा रहा हूं। दिस इज द एविडेंस। 8 सेंटीमीटर का ब्लीड था, पेशेंट को ऑपरेट हुआ, लेकिन उसके बाद में रिकवरी नहीं हुई। हमारे पास जब पेशेंट ने अप्रोच किया तो यूरिया 291, क्रिएटिनिन 3.4, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट यूरिया 44, क्रिएटिनिन 0.6, एब्सोल्यूट नॉर्मल। बिफोर दिस वाज द कंडीशन। आफ्टर वेंटिलेटर ऑफ हुआ है, यहां पर सिर्फ पेशेंट ऑक्सीजन डिपेंडेंसी पर है। आफ्टर पेशेंट घर पर पहुंच गया है। और ये केस बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, उनकी वाइफ यहाँ पर हैं, हम उनको बुलाना चाहेंगे अभी, वो आपको यहाँ पर आकर बताएंगे भी ये केस क्या था। और ये उनके घर पर फिजियोथेरेपी चल रही है उस समय का केस है। और पूरे ट्रीटमेंट के बाद, सब करने के बाद, हमने पेशेंट को 1 साल तक मैनेज किया। 1 साल तक पेशेंट ठीक रहे, लेकिन 1 साल के बाद हम पेशेंट्स को सर्वाइव नहीं करा पाए। दैट इज क्योंकि पेशेंट को बेड सोर डेवलप हुए और देन पेशेंट डिटोरिएट कर गया। और एक बिल पावर भी होती है, कई बार ऐसा होने से भी पेशेंट्स खराब हो जाते हैं, डिटोरिएट कर जाते हैं। तो हमारे बीच होंगी डॉक्टर अर्पणा, है ना, डॉक्टर अर्पणा गाड़े जी मैडम। तो मैं चाहूँगा कि वो आएँ और कुछ बताएं कि कैसे हुआ था। और हमें बड़ा दुख हुआ था कि जब हमारे लिए एक बड़ा लॉस था ये, लेकिन मैडम ने बहुत एक फाइटर की तरह लड़ा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी फाइट करना इज नॉट ए इजी टास्क। एज ए डॉक्टर होकर ट्रीटमेंट करना, बचाने की कोशिश करना, सारे प्रयास करना, लेकिन मैडम ने उसको एज ए फाइटर जीता, लड़ा। और आयुर्वेद ने उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले किया। ये आप उनके मुंह से ही सुनिए वो क्या बताते हैं। थैंक यू। आवाज नहीं आ रही है मैडम। हेलो। यस। ये जो व्यक्ति, ये जो महानुभव आपके सामने है, वो मेरे लिए तो एक देवदूत के समान वो पधारे थे मेरे जीवन में। जहाँ उनको मैं आज मिली हूँ। जब मैंने फ़ोन किया था ऐसे कंडीशन में, वो कंडीशन को तो आपके सर ने आपके सामने रखी है। वो कंडीशन ऐसी थी कि पेशेंट आईसीयू में थे और अच्छे हॉस्पिटल में भी कंसल्टेंट हार चुके थे। उनके बोलने में से समझ में आ रहा था कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे वक्त में डॉक्टर अनुज जैन ने हमारी जो सहायता की,
गाइडेंस किया और उनके हिसाब से जब हम मेडिसिन देने लगे तो ऐसे कंडीशन से पेशेंट कोमा से भी बाहर आया, मतलब मेरे हस्बैंड कोमा से बाहर आए 1.5 महीने में, और बाद में वो बैठने भी लगे व्हीलचेयर पर। उनकी ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब भी निकल गई थी। ऐसे लग रहा था कि बस अभी इसमें से उबर जाएंगे, बाकी बातें तो वो भगवान की इच्छा। लेकिन जो कंडीशन में आईसीयू बड़े हॉस्पिटल में कोई कर नहीं पा रहा था, ऐसे कंडीशन में आयुर्वेद और डॉक्टर अनुज जैन का आयुर्वेद बोलेंगे कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट कैसे दी जाती है, उसका एक बहुत अच्छा एविडेंस बेस्ड एग्जाम्पल मैं और मेरे हस्बैंड बोल सकते कि वो मैंने देखा है, क्योंकि वो तो समझ से बाहर थे, मतलब वो कोमा में ही थे काफ़ी देर तक। तो उनका, डॉक्टर अनुज जैन का मैं बहुत धन्यवाद, और मतलब शब्द नहीं मेरे पास, तो ज़िंदगी भर याद रखूँगी उनका एहसान जो है वो। आज वो डॉक्टर साहब, डॉक्टर नितिन गाड़े हमारे साथ में नहीं है, वो भगवान की इच्छा समझ के उसको छोड़ देंगे। लेकिन सबके लिए ये एक बड़ी बात है कि 1 साल तक मतलब मृत्यु से बाहर निकालना किसी को, ये आयुर्वेद कर सकता है, इसके लिए तालियां होनी चाहिए। और अभी मैं यहाँ पे आई हूँ स्टेज पे, तो मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैम ने अपने शब्दों को एक्सप्रेस कर पाया, ये बड़ी बात है, क्योंकि जब फैमिली मेम्बर हम लॉस कर लेते हैं दैट इज़ वेरी, लेकिन आज हमारे सामने थे तो मैंने कहा आप लोगों को एक बार रूबरू करा दिया जाए, जिन लोगों को लगता है कि ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं इसी मिशन पर हूँ और हम ये सब मिलकर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। ये मेरी कृतज्ञता है, वो मैं व्यक्त करना चाहती हूँ, इतना ही बस। थैंक यू, थैंक यू, हाथ लगा लीजिए। ओके, थैंक यू मैम। अब आगे बढ़ते हैं कि हमने ट्रीटमेंट क्या दिया, मेडिसिन क्या थी। अगेन हम देखेंगे, हमने यहाँ पर योगेंद्र रस का प्रयोग किया है और योगेंद्र रस का जो डोज है वो हमने 2 आवरली रखा है। डोजेस कई बार फ्लक्चुएट्स होते हैं, हर रोज हमें दवाइयों को बदलना पड़ता है और डोजेस को रिकरेक्ट करना पड़ता है। इट इज़ नॉट लाइक कि ये मेडिसिन दे दो और ये चलता रहेगा, नहीं, हमें डेली अपडेट्स करने पड़ते हैं, डेली पेशेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ बात करनी होती है, वहाँ पे जो डॉक्टर कंसल्टिंग होते हैं उनके साथ बात करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन दवाइयों को हमें रोज बदलना पड़ता है। तो यहाँ हमने अर्क मकोए, काशनी, पुनर्नवा, मांस्यादि क्वात। जब सेरिब्रल एडिमा हो, cerebral edema due to cerebral hemorrhage, due to ischemic infarct, due to brain bleed, जिसको हम cerebral bleed भी कहते हैं, या कोई और कारण से cerebral concussion हो, ऐसी स्थितियों में जब पेशेंट को cerebral edema हो, उस समय आप मांस्यादि क्वात का प्रयोग करिए। मांस्यादि क्वात cerebral edema को बहुत अच्छे से मैनेज करता है और cerebral edema वहाँ पर डिक्रीज होता है, क्योंकि इसमें अश्वगंधा, इसमें खुरासानी अजवाइन और इसमें जटामांसी ऐसा योग है। तो सीएनएस पर डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है ये, और इसका उपयोग सेरिब्रल एडिमा में कम करने में हम सारे केसेस में जहां पर किसी भी कारण से सेरिब्रल एडिमा है वहां पर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। 5 इयर्स मेल। जब मैं आयुर्वेद में प्रैक्टिस में आया तो मुझे बताया कि अरे इसमें तो जो है ना मैक्सिमम बूढ़े लोग आते हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स आते हैं जिनको चलने में दिक्कत हो रही है, नी जॉइंट पेन हो रहा है, तो वो आ जाते हैं, चलता रहता है ट्रीटमेंट। अब हम जब डील कर रहे हैं तो हमारे पास कैसे कैसे केसेस आते हैं, देखिए इमरजेंसी के। अगेन 5 साल का बच्चा है और आपको सुन के गर्व होगा कि आप किस फील्ड में हैं और आपको क्या पढ़ने को और आगे करने को मिलेगा। अच्छा बताओ, किसी की फैमिली में कोई पहले से पॉलिटिशियन हो और उसका बच्चा पॉलिटिशियन बने,
कोई डॉक्टर हो पहले से, उसका बच्चा डॉक्टर बने, तो हमें कितना गर्व महसूस होता है ना कि हम किस फैमिली से आते हैं, हमारी लेगेसी क्या है। पता है आपकी लेगेसी क्या है? 5000 साल पुरानी। आप जिस वंश में हैं, जिस संस्कार जो आपका हुआ और हमारा हुआ आयुर्वेद के माध्यम से, हम उस फैमिली का पार्ट बन चुके हैं जो 5000 साल पुरानी लेगेसी के साथ है। तो बिल्कुल कमतर आंकने की कोशिश नहीं करना अपने आप को। 5000 साल पुरानी लेगेसी है हमारी। हमारे वंशज कोई छोटे मोटे नहीं है, चरक, सुश्रुत और बागवट हमारे वंशज हैं। इस गर्व के साथ आगे बढ़िए आप, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है किसी भी केस में। एक केस देखेंगे, पेशेंट वाज इन आईसीयू सिंस 10 डेज। क्या था पेशेंट का? पेशेंट को देयर इज पार्शियल कोलैप्स कंसोलिडेशन इन्वॉल्विंग लेफ्ट अपर लोब विथ फाइब्रोब्रोंकेक्टिक changes involving left lower lobe with extensive superimposed consolidation with area of cavitation। तो यहां पर बच्चे को कंसोलिडेशन हुआ सीटी थोरेक्स में, चेस्ट एक्सरे, उसके बाद में यहां पर पेशेंट को पायोमा मतलब पस फॉर्मेशन हो गया किसके अंदर? प्लूरल कैविटी के अंदर। तो यहां पर डायग्नोस हुआ, उसके बाद में पेशेंट को आईसीटी डाल दी गई, इंटरकोस्टल ड्रेनेज। एक सिंपल सा प्रोटोकॉल होता है कि एक आईसीटी डाल के टैप कर देंगे और उसको कुछ दिन तक रखते भी हैं यदि टाइम लग रहा है, तो इंटरकोस्टल ड्रेनेज बोलते हैं। तो यहां पर बच्चे को डाल दी गई लेफ्ट साइडेड इंटरकोस्टल ड्रेनेज सीन इन सिटू विथ माइल्ड डिक्रीज इन लेफ्ट साइड न्यूमोथोरेक्स and better inflation in left lung hydropneumothorax with air fluid level noted again। that is the problem। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था। आईसीटी डालने के बाद में जब चेक एक्सरे किया गया, चेस्ट एक्सरे किया गया, तो उसमें देखा गया कि पेशेंट को, बच्चे को हाइड्रोनीमोथोरेक्स डेवलप हो गया है। तो हाइड्रोनीमोथोरेक्स डेवलप हो गया है और वहां पर एयर फ्लूइड, एयर लेवल दिखाई दे रहा है। दैट इज द वेरी क्रूशियल साइन। अब यहां प्रॉब्लम शुरू होती है। दिस इज द ऑनगोइंग ट्रीटमेंट। और ये पेशेंट इस कंडीशन में हमारे पास आया, इन्होंने अप्रोच किया, और ये पेशेंट एनसीआर के एक बड़े हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल में ये एडमिट था। यहां पर ये होने के बाद में आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड का लोअर लोब है वो वहां पर फ्लूइड होने के कारण नहीं दिख रहा है, और यहां पर आपको एक आईसीटी ड्रेनेज दिख रहा होगा, ट्यूब दिख रही होगी, इंटरकोस्टल ड्रेनेज। लेकिन इसके बाद जो हुआ दैट इज प्रॉब्लमेटिक। हाइड्रोनीमोथोरेक्स विथ एयर फ्लूइड लेवल नोटेड अगेन। ये उसी चेस्ट एक्सरे का रिपोर्ट है कि उसके यहां पर क्या हुआ है, एयर फ्लूइड लेवल नोटेड अगेन, मतलब बार बार वहां पर एयर और फ्लूइड दिखाई दे रहा है। दैट इज वेरी अलार्मिंग साइन। अब यहां पर डॉक्टर्स कंसर्न में चले गए, परेशान हो गए, और पूरे डॉक्टर्स का एक समूह बैठता है, पूरी टीम बैठती है और वो डिसाइड करती है तो अब करना क्या है। दैट इज द प्रॉब्लम। तो उन्होंने फिर थोरेसिक सर्जन को बुलाया, फिजिशियन को बुलाया, सर्जन आया, सब लोग आए, और उन्होंने एक टीम ने पूरा डिसाइड किया कि इस बच्चे की हमें ओपन थोरेसिक सर्जरी करनी पड़ेगी। ओपन थोरेसिक सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि यहां पर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने के कारण बच्चे के लंग्स के अंदर एयर कलेक्ट हो रही है। यदि हम इस समय पर आईसीटी को ऐसे ही खींच के बाहर निकाल देते हैं तो उससे एयर वापस जा सकती है और बच्चा ऑन द स्पॉट कोलैप्स हो सकता है। तो इसलिए पूरी टीम बैठती है 5-7 डॉक्टरों की, और ये डिसाइड करती है कि इसको ओपन थोरेसिक सर्जरी करनी पड़ेगी। दैट इज ऑल्सो हाई रिस्क कंसेंट, क्योंकि करने के बाद भी बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा पता नहीं। 5 साल का बच्चा है, रिलेटिव्स ने हमें अप्रोच किया, हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। कोई नहीं, हम ले लेते हैं केस को। ये देखिए, ये चेस्ट एक्सरे देखेंगे हम और ये चेस्ट एक्सरे देखेंगे। यहां पर आपको लोअर लोब प्रॉपर नहीं दिख रही है, दैट इज ट्रू, बट देयर इज नो एयर फ्लूइड लेवल नोटेड अगेन। तो 9 दिन के अंदर हमने क्या किया कि पेशेंट के लंग्स के अंदर जो एयर फ्लूइड था उसको गायब कर दिया। अब क्या लिखा है यहां पर, इन कंपैरिजन टू प्रीवियस स्कैन। मैं जितने भी स्कैन्स दिखाऊंगा, एविडेंस दिखाऊंगा, दैट इज कंपैरेटिव स्टडी, हमारी नहीं है भाई, हम नहीं कर रहे हैं।
In comparison to previous chest radiograph dated on 9th March of 2023, left-sided ICD seen in situ with mild decrease in left-sided pneumothorax and better inflation of left lung, no air fluid level seen in present scan. सोचिए कि आपने 9 दिन में एक हाई रिस्क ओपन थोरेसिक सर्जरी को बचा लिया, वो भी 5 साल के बच्चे में। आप सोचिए कि बहुत बड़ा काम है ये, तो बहुत बड़ी दवाइयां लगी होंगी, बहुत मेहनत लगी होगी, बहुत कॉस्टिंग लगी होगी। नहीं, बहुत सिंपल सा काम है ये, देखो। और हां, 9 दिन के बाद मैंने बोल दिया इनका आईसीडी निकलवा दीजिए। अब डॉक्टर्स आईसीडी निकालने में भी डर रहे हैं, और उन्होंने आईसीडी एक्सरे टेबल पे निकाला। दिख रहा है आपको? लेफ्ट साइड में दिख रहा है, एक आपको वायर दिख रहा है, वो आईसीडी ट्यूब है जो निकाल दी गई। लेकिन उसी समय पर एक्सरे किया गया, कहीं वापस नेगेटिव प्रेशर तो नहीं आ जाता है कहीं से। और बच्चा जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस समय भी सुरक्षित है, लाइव है, और किसी प्रकार की कोई उसको रिलैप्स नहीं हुआ, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद एंड मेडिसिन इज ओनली वन एंड ओनली। रस सिंदूर 60 mg, डोज इज बीडी, दिन में 2 बार, नथिंग एल्स। कोई दूसरी मेडिसिन इसके साथ में नहीं दी गई, किसी भी प्रकार की कोई इंटरवेंशन नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ रस सिंदूर 60 mg के डोज में दिन में 2 बार दिया गया, नथिंग एल्स। दिस इज द एक्यूरेट इफिकेसी ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन। अब आप सोचिए कि इतना जटिल केस और हमने सिर्फ एडवाइस किया ये। नंबर ऑफ मेडिसिन देना जरूरी नहीं है, राइट डायग्नोसिस करना जरूरी है। भाई ये कैसे पहुंचते हैं इस पर? तो यहां हम देखेंगे, सिंपल सा एक टर्म है, हाइड्रोनीमोथोरेक्स। हाइड्रो मतलब जल, जल इज इक्वल टू कफ। न्यूमोथोरेक्स मतलब, न्यूमो मतलब एयर, एयर मतलब वायु। तो दैट मीन्स एयर ट्रैप्ड बाय द कफ। तो कफ वातात्मक अवस्था हुई है, और कफ वात शामक औषधि हमें देनी थी। हमारा एक्सपीरियंस था कि कफ वात शामक औषधि कौन सी है? रस सिंदूर है, जो रस व फुफ्फुस व स्रोतस पर कार्य करती है। और हमने सिंपल सिंगल ड्रग ऑफ मेडिसिन से पेशेंट को बाहर निकाल लिया, और सर्जरी एक हाई रिस्क कंसेंट सर्जरी से बचा लिया। कितना अच्छा प्रिस्क्रिप्शन है ना, देखो, सिर्फ एक। नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ेंगे। दिस इज फ्रॉम ऑल्सो फ्रॉम नागपुर सिम्स हॉस्पिटल। मैं आपको जितने केसेस दिखाऊंगा 360 डिग्री आपका विजन बदल जाना चाहिए आज के बाद। और ये ऐसा नहीं है कि मैं कर पा रहा हूं, मैं ही कर सकता हूं, ऐसा नहीं है, आप भी कर सकते हैं। तो आधा पौन घंटे में, 45 मिनट में, 30 मिनट्स में हम आपको यही सिखा सकते हैं और बता सकते हैं, ब्रेन स्ट्रॉम कर सकते हैं कि यस, इफ आई कैन यू कैन, राइट। तो ये केस देखेंगे, नॉट ओबेइंग कमांड्स। इस कंडीशन में पेशेंट था, अनेबल टू वॉक, अनेबल टू स्टैंड, सेमी कॉन्शियस। लेकिन ये केस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पेशेंट को सेरिब्रल ब्लीड होता है। सेरिब्रल ब्लीड के बाद में पेशेंट का क्रेनियोटॉमी होता है, ऑपरेशन होता है क्रेनियोटॉमी का, ब्लड क्लॉट को निकाल दिया जाता है। और उसके बाद अगेन जब स्कैन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि पेशेंट को फिर से रीब्लीड हुआ है, क्योंकि पेशेंट को फिर से पैरालाइटिक के जो इफेक्ट सिम्टम्स थे वो सारे वापस आ गए। अब रीब्लीड हुआ है, डॉक्टर फिर से पहुंचते हैं और फिर वो बोलते हैं कि अच्छा एक काम करते हैं, फिर से हो गया तो दोबारा ऑपरेट कर देते हैं। अब चूंकि हमारे पास एक्सपीरियंस था, पेशेंट हमारे पास अप्रोच करते हैं और हमने पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू किया। 5 मिनट की मेरे पास एक लेटर आ गई है, मैं जल्दी जल्दी लेता हूं। बिफोर सर्जरी 2.8 सेंटीमीटर थिकनेस, मिड लाइन शिफ्ट 1.8 सेंटीमीटर। जो लोग इस बात को समझते होंगे कि सीटी स्कैन या एमआरआई ब्रेन को कैसे देखते हैं, तो मिड लाइन शिफ्ट इज क्रूशियल थिंग। यदि मिड लाइन शिफ्ट हो गई है, दैट मीन्स क्रिटिकलनेस बहुत ज्यादा है। तो यहां पर पेशेंट को ऑपरेट किया गया। ऑपरेट के बाद में थिकनेस 2.24 सेंटीमीटर, मिड लाइन शिफ्ट 8.8 mm, कुछ कम हुई है। अगेन जब केस हमारे पास आया तो इस कंडीशन में आया रीब्लीड होने के बाद, थिकनेस 2.9 सेंटीमीटर, मिड लाइन सिर्फ 1.8 सेंटीमीटर। आफ्टर 43 डेज ऑफ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ओनली आयुर्वेद,
कोई दूसरा यहाँ पर ऑपरेशन क्रेनिटोमी ड्रिल होल नहीं होने दिया, हमने नहीं किया है। और थिकनेस 21 mm एंड मिड लाइन सिर्फ 9 mm। मतलब जो सर्जरी करने के बाद में इफेक्ट्स आने थे वो हमारे ट्रीटमेंट के बाद आ गए। और 10 दिन के अंदर हमने पेशेंट को चला दिया था। चूंकि पेशेंट जैन है तो उनको मंदिर जाना होता है, तो 10वें दिन वो मंदिर गए थे। दिस केस फ्रॉम सागर बेसिकली, बट treated in Nagpur सिम्स हॉस्पिटल। नो सेरेब्रल हेमरेज आफ्टर 8.5 मंथ। हमने कहा हमारे लोगों को बोलो समझ में नहीं आएगा, एविडेंस जनरेट करना पड़ता है मुझे। तो अब चला तो दिया मैंने पेशेंट को, उसके सेंसेस नॉर्मल हो गए, कॉन्शियस हो गया, सब ठीक हो गया, हो बढ़िया हो गया पेशेंट। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी पेशेंट नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, कोई पैरालाइटिक इफेक्ट नहीं है पोस्ट ऑल्सो। लेकिन ब्रेन के अंदर क्या हुआ, वो ब्लीड का क्या हुआ, वो ब्लीड कहां गया? तो देयर इज एविडेंस, देयर इज नो सेरेब्रल हेमरेज, कोई भी ब्लीडिंग नहीं पाई गई 8.5 महीने के बाद। तो देयर इज एफिकेसी ऑफ आयुर्वेद ट्रीटमेंट, आप देख सकते हैं। और एक केस हमने जो है पब्लिश किया CCRS के जनरल, भारत सरकार के जनरल में। 2.5 साल से ज्यादा का समय लगा इसको पब्लिश करने में, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग जब स्क्रूटनी करते हैं बोले इट इज नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। पेशेंट को फोन करेंगे, पेशेंट के घर वालों को फोन करेंगे और वहां से स्क्रूटनी होगी, कंफर्म होगा, तब जाके केस पब्लिश हुआ है। आप लोग इसको गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं क्या क्या ट्रीटमेंट कैसे कैसे दिया। बट दिस इज द कंक्लूजन। अगेन ब्रतवा चिंतामणि रस दिन में 3 बार 125 mg, मांस्यादि क्वाथ अगेन, एंड पुनर्नवा वचा हरिद्रा वंशपत्र, इसका सिरोलेप सिर पर हम बाल्ड करके इसका थंब थिकनेस का सिरोलेप देते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिस इज केस ऑफ CA ब्रेन। CA ब्रेन का केस है, SOL ऑपरेटेड है, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, जिसको हम ब्रेन ट्यूमर के नाम से जानते हैं। 25 साइकिल कीमोथेरेपी की, 25 रेडियोथेरेपी की साइकिल होती है। लेकिन पेशेंट डेवलप्स पैरालिसिस ड्यू टू मेटास्टेटिक CA, ब्रेन में मेटास्टेसिस हुआ और इसके कारण पेशेंट कंफ्यूजन, इम्बैलेंस, अनएबल टू वॉक विदाउट सपोर्ट। प्लीज ओके, दिस वाज द कंडीशन। ये पेशेंट का बैलेंस गया। ये पेशेंट अभी अंडर ट्रीटमेंट है हमारे, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी एब्सोल्युटली ठीक है। लगभग 2 साल के आसपास हो गए पेशेंट को। देयर इज नो प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज, देयर इज नथिंग, पेशेंट डूइंग वेल। CA ब्रेन मेटास्टेटिक केस है। क्या ट्रीटमेंट दिया? ब्रतवा चिंतामणि रस, स्वर्ण समीर पन्ना, गुरुजी शब्द, अश्वगंधा, मांस्यादि क्वाथ अगेन टू डिक्रीज सेरेब्रल एडिमा। नेक्स्ट केस देखते हैं। दिस इज द केस ऑफ ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी से आपको सिर्फ एक हाइलाइट्स दे देता हूं कि कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं और क्या अप्रोच होती है। दिस इज द केस ऑफ ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस, 59 ईयर फीमेल, नॉन केस ऑफ पल्मोनरी कॉक्स, मेटास्टेटिक टू ब्रेन। ब्रेन में गया, कब पता चला? पेशेंट की एक आई बॉल मूवमेंट होना बंद हो गई, अप्रोच किया गया, देखा तो ब्रेन MRI ब्रेन किया गया, उसमें देखा गया मल्टीपल टिनी नोड्यूलर एंड रिंग एनहेंसिंग लीजन आर सीन स्कैटर्ड इन बायलैटरल सेरेब्रल हेमिस्फीयर, बायलैटरल सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ब्रेन स्टेम एंड बायलैटरल डीप ग्रे मैटर with occasional mild perilesional edema. The lesion are hypointense on T2 weighted images. Overall features active inflammatory granulomas, likely tuberculomas. तो बेसिकली दिस केस ऑफ ट्यूबरक्लोमाज, मतलब छोटे छोटे रिंग्स ब्रेन के अंदर बन जाते हैं जिसको ट्यूबरक्लोमाज कहते हैं, और ये स्कैटर्ड नेचर में पूरे ब्रेन में फैले हुए हैं। और ऐसी स्थिति जब होती है, ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस जब होती है, पेशेंट के बाहर आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी रेजिस्टेंट टू ड्रग होता है। MDR जिसको बोलते हैं, XDR जिसको बोलते हैं, रेजिस्टेंट टू ड्रग होता है। और जब ड्रग ही रेजिस्टेंट है तो पेशेंट बाहर कैसे आएगा? क्योंकि पेशेंट 2 साल से ट्रीटमेंट ले रहा है TB का। बारी आती है हमारी। दिस इज द चेस्ट स्कैन्स एंड ऑल। आफ्टर 9 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट, पेशेंट को तो हमने बचा लिया, ट्रीटमेंट पूरा हुआ, 9 महीने के बाद हमने रीस्कैन किया पेशेंट का। तो क्या हुआ? इन कंपेरिजन टू, मैं फिर से बता रहा हूं, इन कंपेरिजन, मेरी स्टडीज नहीं,
इन कंपैरिजन टू प्रीवियस स्टडी ऑन डेटेड ऑन 2/9/2022, जो मैंने अभी इसके पहले पढ़ के सुनाई थी आपको, देयर इज कंप्लीट रिजोल्यूशन ऑफ ट्यूबरक्लोमास एंड ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस. Complete recovery of tuberculomas and tubercular meningitis, that is marked significant improvement and eradication of disease with the help of only Ayurvedic treatment, that is अब्रक भस्म, सितोपलादी का योग, मधुमालिनी वसंत. बट what is the master stroke? Master stroke is दूषी विषारी गुलिका धूम नश्य. तो जब हम इंटरनल मेडिसिन देते हैं तो ब्रेन बैरियर होने के कारण बहुत सारी मेडिसिन ब्रेन तक नहीं पहुंचती हैं. यदि हम भी वहां पर टिके रहते तो कोई फायदा नहीं होता. यूजी में, पीजी में हम लोग नस से पढ़ते हैं, और नस में भागवत जी का एक श्लोक है, जब हम पढ़ेंगे नासा ही शीर्षोद्वारम, तो हमें ब्रेन में जाना था. ब्रेन में कहां से जाएंगे? नासा से जाएंगे. किससे जाएंगे? दूषी विषारी गुलिका के साथ गए. बट दिस इज माय एक्सपर्टीज. दूषी विषारी गुलिका क्यों चयन किया उसको बाद में बताएंगे, टाइम नहीं है. तो धूम नश्य दिया. धूम नश्य देने से रिजल्ट्स आपके सामने है, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं पेशेंट एब्सोल्युटली नॉर्मल है आज तक. देयर इज नो रिलैप्स. जो पेशेंट 2 साल तक ट्रीटमेंट लेने के बाद भी मेटास्टैटिक होकर ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस में जाती है, वो पेशेंट को वहां से बचा कर लाए हैं. पहले इमरजेंसी ट्रीटमेंट किया, बाद में टोटल ट्रीटमेंट किया और इरेडिकेशन ऑफ डिसीज किया. दिस इज द एविडेंस. दिस वाज द मेडिसिन. 4 years फीमेल, 4 साल की बच्ची. 4 साल की बच्ची क्या होता है? पेशेंट वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल एट द टाइम ऑफ कंसल्टेशन. पेशेंट को, बच्ची को सीवियर पेन इन लेग्स कंप्लेंट शुरू होती है. अनेबल टू वॉक हो जाती है, पेशेंट चल नहीं पाती. अनेबल टू स्टैंड विदाउट सपोर्ट. दिस इज द नर्व कंडक्शन स्टडी सोज एक्सोनल न्यूरोपैथी. बच्ची को क्या हुआ? एक्सोनल न्यूरोपैथी हुआ है. उनका डायग्नोसिस है, हमें कोई मतलब नहीं है इससे. हमने ट्रीटमेंट क्या किया देखेंगे. देखो बच्ची कैसे चल रही है, उसका आप गेट देखिए. बहती हवा सा था वो. विद इन 7 days. और ये बच्ची को ट्रीटमेंट किया गया 4 दिन तक, नॉट रिस्पॉन्डिंग इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ ग्वालियर. ये जो आपने इसका देखा ना, वहीं का था जो उसका पहले वाला वीडियो था. और वो वहां से ही मुझे लाके दिखाया गया पेशेंट को, और वहां से हमने बोला भाई इसको यहाँ से ट्रीटमेंट हम करेंगे, और ये पेशेंट की रिकवरी हुई. क्या दिया हमने? भरद्वाज चिंतामणि, स्वर्ण समीर पन्नक, गुरुची सत्व, सितोपलादी चूर्ण दिन में 2 बार, विषम जुरांतक लो 60 mg दिन में 2 बार. दिस वाज द ट्रीटमेंट. पेशेंट एब्सोल्युटली फाइन टिल नाउ. There is no relapse, there is no power loss, there is no grip loss, absolutely recovery within 1.5 months. उसके बाद में ट्रीटमेंट भी उसका बंद कर दिया गया, कोई मेडिसिन उसके बाद नहीं दी गई. तो मैं केसेस दिखा रहा हूँ कितना फास्ट है आयुर्वेद हमारा, कितना फास्ट है. बट व्हाट इज द अप्रोच, कैसे करते हैं अप्रोच, क्या करते हैं, इसको फिर कभी सीखेंगे क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास. दिस इज काव्या पेशेंट. दिस इज वेरी रेयरेस्ट केस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ. गुलियन वेरी सिंड्रोम. गुलियन वेरे सिंड्रोम, उसमें भी कौन सा? मिलर फिशर सिंड्रोम, MFS. तो नॉर्मली गुलियन वेरी सिंड्रोम में क्या होता है कि पेशेंट को लोअर लिम्ब मतलब फिट ऑफ लेग, वहां से कमजोरी आना शुरू होती है और ऊपर की तरफ असेंडिंग डिसऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ना शुरू होती है. देन अगेन पेशेंट गोज इन रेस्पिरेटरी फेल्योर. बट इन दिस केस पेशेंट स्टार्ट विथ आई प्रॉब्लम. आई मसल्स में पैरालिसिस हो जाता है. यहाँ पर बहुत इजी नहीं होता इसको डायग्नोसिस करना. आई मसल्स में पैरालिसिस होकर पेशेंट को ऑप्थेल्मोप्लीजिया हो जाता है. ऑप्थेल्मोप्लीजिया, कैसे कैसे शब्द है, देखो आपको मजा आएगा सुनने में, और कैसे केसेस को हम डील कर रहे हैं. और आयुर्वेद कितना सक्षम है इस बात को आप समझिए. ये मेरी उपलब्धि नहीं है, ये हम सबकी और आयुर्वेद की सम्मिलित उपलब्धि है. पेशेंट कैम विद कंप्लेंट्स ऑफ स्क्विंट आई डिप्लोपिया. अब ये डायग्नोस हो गया और इसको बोल दिया कि भैया अब तुम दिल्ली जाओ. ग्वालियर की पेशेंट है, दिल्ली भेज दिया गया हायर सेंटर पर. नहीं, ये हमसे नहीं होगा, इसको जाओ, क्योंकि इसमें इम्यूनोथेरेपी करनी पड़ती है, कई बार इसमें हेमोपेरेफेरेसिस करना पड़ता है. ये देखिए स्क्विंट आपको दिख रहा है यहां पर. ये मैं मूव कर रहा हूं पेन को और उसमें हम स्क्विंट को चेक कर रहे हैं. तो स्क्विंट विथ डिप्लोपिया.
ऐसी स्थिति में पेशेंट है और ये बहुत खतरनाक बीमारी है और आई में अटैक किया है, दैट इज रिलेटेड टू सीएनएस, और सीएनएस में जब ये जाता है तो दैट मीन्स डेडली कॉम्बिनेशन है ये। तो जीवीएस में भी एमएफएस, आप लोग जिनको नहीं पता हो जाके गूगल करें, पढ़ें, रिसर्च करें इसके बारे में, तो आपको और आनंद आएगा। ये अभी उसका मूवमेंट जो है स्क्विंट था वो इंप्रूव हो गया है। ये देखिए, यहाँ कंप्लीट रिकवरी हो गई है पेशेंट की। स्क्विंट और डिप्लोपिया दोनों रिजॉल्व कर लिए हैं हमने, और जीबीएस के लिए जो इतना लंबा चौड़ा स्टेरॉइड्स देना और उसके लिए जो मेडिसिन देनी है वो सब से हमने पेशेंट को बचा लिया, क्योंकि वेरी क्रिटिकल डिसीज, इसमें जरा सी चूक पेशेंट को पैरालाइज्ड करती है और रेस्पिरेटरी फेल्योर में आगे जाके पेशेंट कोलैप्स कर सकता है। वेरी रेयर डिसीज है ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ पेशेंट डिप्लोपिया, ओ सॉरी स्क्विंट, आप देख पाएंगे। ओके, थैंक यू। अब इतना बड़ी बीमारी, क्या ट्रीटमेंट देना है सर? मल्ल सिंधु त्रिवंग अश्वगंधा प्रवाल पिष्टि बिलवादी गुल का, फिनिश, सिंपल। फोटो ले लीजिए, मेरे को मैसेज सामने से मिल रहा है कि बंद करो। मैं आपको एक केस और दिखाता हूं और कंप्लीट करते हैं इसको। टाइम है सर 2 मिनट? ओके, थैंक यू। अगेन 6 ईयर फीमेल, दिस इज फ्रॉम भोपाल। ये पेशेंट बेसिकली रहने वाले सागर के हैं। भोपाल एम्स से पेशेंट रेफर होता है और पेशेंट की आप हिस्ट्री देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है। 6 ईयर फीमेल, 14/10/2022 में पेशेंट एनरोल होता है हमारे पास। उसके पहले क्या होता है? डायग्नोस्ड एज इन एम्स भोपाल पेनसाइटोपिनिया विदाउट ऑर्गेनोमेगाली, विदाउट लिम्फेडेनोपैथी, वेरी सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया, क्वेरी सेकेंडरी टू ईवीबी, क्वेरी पोस्ट वायरल, क्वेरी इडियोपैथिक। जब इनको पूरा ट्रीटमेंट कर लिया गया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है पेशेंट, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे मेडिसिन को, देन पेशेंट रेफर टू बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो एम्स भोपाल से बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए दिल्ली एम्स में भेजा गया पेशेंट। अब प्रॉब्लम यहीं हो गई कि ट्रेन सीधी दिल्ली नहीं जा सकती, बीच में ग्वालियर पड़ता है। तो पेशेंट ग्वालियर में आ गया हमारे पास, लेकिन आ गया वो तो ठीक है, लेकिन किस कंडीशन में आया? हीमोग्लोबिन ओनली 4.2, प्लेटलेट काउंट इज ओनली 4000। ये है इमरजेंसी, इसको आयुर्वेद डील करता है। 4000 प्लेटलेट, बोलो कितने लोग करोगे डील? हीमोग्लोबिन ओनली 4.2। इसके बाद में मैं 1000 वाला भी दिखाऊंगा केस, आपको टाइम नहीं है इसलिए। 1000 केस, 1000 प्लेटलेट ओनली। तो ये प्लास्टिक एनीमिया का केस है। 4.2, 4000 प्लेटलेट है। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट 3.1, आफ्टर 15 डेज डिक्रीज हुआ। ये एम्स भोपाल की रिपोर्ट, उसके पेपर्स हैं, ये देखिए यहाँ पर। डॉक्टर एडवाइज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। आफ्टर 1 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट हीमोग्लोबिन 3.6, प्लेटलेट काउंट 15,000। After 2 months, 5.8, platelet 20,000. After 4 months of treatment, hemoglobin 8.8, platelet count 42,000. अभी नहीं, मजा आएगा आपको, तेज बजाना तालियां। After 6 months of treatment, hemoglobin 9.5, platelet count 40,000. After 1 year of treatment, hemoglobin 11.7, platelet count 89,000. After 1 year and 1 month, 11.6, platelet 1.2 lakh. After 15 months, 11.79, platelet 1.05, hemoglobin 11.3, 1.15, and last hemoglobin 12.45, platelet count 1.53 lakh. That is only Ayurvedic treatment. There is no transfusion of whole blood, there is no transfusion of platelet-rich plasma, there is no platelet jumbo bag, there is no steroid, there is no antibiotics, there is no iron, there is nothing. only Ayurvedic protocol, वो हम आपको दिखाते हैं।
अफोर्ड करो अब इसको। ज्वर नागमयूर चूर्ण, ज्वर भैरव चूर्ण, दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस। भेषज रत्नावली ज्वर रोग अधिकार, वहां से हमने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को लिया और बच्ची को ठीक किया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी बच्ची ठीक है, कोई ट्रीटमेंट उसके 1.5 साल के बाद नहीं दिया गया। और इसका पेपर भी जल्दी से पब्लिश होने वाला है, इन पाइपलाइन है, आप लोग गूगल पर पढ़ पाएंगे। थैंक यू। ओके, मुझे लगता है टाइम है या कंक्लूड कर दूं मैं? ओके, देयर इज सो मेनी केसेस इंटरेस्टिंग, बट ये दिस वाज द 1000 प्लेटलेट ITP थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा का केस है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना, यहां बुलाया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। जो कुछ भी मैंने बोला उसमें यदि कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। बाकी जो मेरे शब्द थे मेरे गुरु आज्ञा से, और गुरु जी के द्वारा दिए गए शब्दों को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, प्रोपोगेट कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for that insightful and clinically enriching session. Your talk has clearly demonstrated how Ayurveda is not limited to chronic care, but has strong potential in acute and emergency management when applied with precision and classical wisdom. On behalf of the organizing committee, I express our heartfelt gratitude for your valuable time and guidance. I request Dr. Suryavanshi ma'am to felicitate Dr. Anuj Jain sir. अच्छा, बैठना है। थैंक यू। थैंक यू। With this, we now move towards an interesting segment of today's program, the podcast session. Today, we have two eminent podcast hosts, Dr. Best Panchakarma Practitioner Awardee and Best Teacher Awardee, Dr. Gautam Kumar Jogad Sir, Professor and HOD Panchakarma Department, and Dr. Sarika Palve Ma'am, Professor and HOD Shalakya Tantra Department. I kindly request our guest, Dr. Anuj Jain sir, and Dr. host, Dr. Gautam Kumar Jogad sir, and Sarika Palve ma'am to sit there, to take their seats and start podcast session. सबसे पहले अनुज जैन सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया है और हमारे स्टूडेंट इससे काफ़ी इंस्पायर होंगे। सलमान खान का एक डायलॉग से मैं इस पॉडकास्ट का शुरुआत करता हूँ कि दो चीज़ें, एक तो सलमान खान और दूसरी आयुर्वेदिक इमरजेंसी, ये दिल में आती है लेकिन समझ में नहीं आती। तो इमरजेंसी की ट्रीटमेंट आयुर्वेद में बोली गई है, ये ठीक है। और बहुत से वैद्य, जब मैं भी 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ, मेरा एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि जैसे जैसे वैद्य सीनियर होते जाता है उसके बाद लोग उसके पास, सोसाइटी उसके बाद इमरजेंसी पेशेंट लाना शुरू करती है। लेकिन माशाअल्लाह आप तो अभी भी जवान हैं, और जब ने आपने प्रैक्टिस शुरू की होगी तब तो और भी ज़्यादा जवान थे। तो आपकी ज़िंदगी में आपका इमरजेंसी का पहला पेशेंट कब मिला? फिर आपने ऐसा क्या अप्रोच रखा कि लोग आपके पास इमरजेंसी के लिए अप्रोच करने लगे? तो ये जानने में स्टूडेंट ज़्यादा उत्सुक है। उनको आपने इतने सारे केसेस बताए, हमने आपको समय कम दिया, लेकिन स्टूडेंट को ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए हमने पॉडकास्ट सेशन इस टाइप का रखा है। तो सर इस पर आप प्रकाश डालिए। जी, थैंक यू सर। बेसिकली जब 2007 में मैंने यूजी कंप्लीट किया सर, तो जब मैं सोसाइटी में गया तो एक सबसे बड़ा टास्क यही हमारे सामने, और एक क्रिटिसिज्म भी था कि आयुर्वेद से इमरजेंसी मैनेज नहीं हो सकती। तो हम, मुझे ये बात जो ना दिल में चुभती थी, यार ये कैसा हो सकता है, ये तो ठीक नहीं है ना। पहले क्या इमरजेंसीज होती नहीं थी,
और होती थी तो क्या उनको ऐसे ही छोड़ देते थे? ट्रीट तो करते ही होंगे। तो इस बात को मैंने जो है ना, एक बोलते हैं ना, दिल पे ले लिया बस। और दिल पे क्यों ले लिया? क्योंकि मैं जिस पैथी से आता हूँ, जिस चीज को मैंने पढ़ा है, जो मुझे रोजी रोटी देने वाली है, उसके लिए मैं डेडिकेटेड हो जाऊंगा। यहां से वो मैंने टास्क लिया। एक कभी देखो जीवन में जिम्मेदारी कोई देने नहीं आएगा आपको कि साहब आप इस पे काम कर लीजिए। खासकर मैं यंगस्टर्स के लिए बोल रहा हूँ, कोई जिम्मेदारी देने नहीं आएगा आपको, जिम्मेदारी स्वयं उठानी पड़ती है। तो मैंने ये जिम्मेदारी स्वयं से उठाई और यहां से मैंने शुरुआत की इमरजेंसी की। तो पहले मैंने सबसे पहले शुरू किया कि हमारे यहाँ कोई कैंसर पे ट्रीटमेंट कर रहा है, कोई किसी पे कर रहा है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गैप था। और गैप था कि हम इमरजेंसीज को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। उस गैप को भरने के लिए मैंने अपना पूरा 15 साल अभी लगा दिए और आगे भी लगाते रहेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट यह था कि हमने शुरुआत की सिरोनस्य से। और मेरा टास्क ये था कि अभी किसी को सिर दर्द हो रहा है, हम कितना भी बोलते रहे भाई आयुर्वेद महान है, आयुर्वेद बढ़िया है, शाश्वत है, लेकिन हमें खाना क्या है, क्या दवाई खाऊंगी जिससे मुझे रिलीफ हो जाए? तो दैट टाइम आई रिसर्च सूत शेखर रस प्रदमन नस्य। आप यूट्यूब पर जाकर देखेंगे, बहुत सारे वीडियोस मेरे मिलेंगे उस पर, और बहुत सारे लेक्चर्स आपको सुनने को मिल जाएंगे। तो सूत शेखर रस का प्रदमन नस्य देते ही पेशेंट उठ नहीं पाता है, तब तक उसका सिर दर्द ठीक हो जाता है। ये मेरा फर्स्ट ब्रेक थ्रू था जहां पर हमने काम किया। और फिर वहां से सर ये सिस्टम चालू ही हुआ। और फिर सारे इमरजेंसीज धीरे धीरे वर्ड टू वर्ड माउथ, मैं कभी पब्लिसिटी मैं करता नहीं हूँ, माउथ टू माउथ लोग आना शुरू हो गए और लोगों को पता चला कि नहीं, कोई तो व्यक्ति है जो काम कर रहा है, और फिर केसेस अपने आप आ जाते हैं। तो दैट इज द इनिशिएशन ऑफ इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन आयुर्वेद। थैंक यू सर। मैडम सर, एज अ शला की एक बहुत बड़ी बात हम लोगों को पता हो गई और हम लोग उसको व्यवहार में लाना चाहेंगे। सर, ये केवल संयोग नहीं है कि आप यहाँ पे आज उपस्थित है, और कोई साधारण इत्तेफाक भी नहीं है। आपने स्वयं हमारे मित्र डॉक्टर गाड़े सर की केस आपने यहाँ पे प्रेजेंट की है, उनका उपचार किया है, उसे प्रस्तुत भी किया है, और आपका नाम तभी से हमारे मन में एज जैसे मैडम ने बोला था कि देवदूत जैसा छप गया है। नाम हम बस सुन रहे थे और आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ पे उपस्थित है, इससे और एक भावनात्मक बात जुड़ी है कि सर और मैं, हम दोनों सर से ऐसे ही गहराई से जुड़े हुए थे, और हाँ, आज हम दोनों आप लोगों का आपका पॉडकास्ट यहाँ पे ले रहे, तो इसे एक सहज इत्तेफाक नहीं बोल सकते। ठीक है सर। तीनों लोगों की प्रकृति देखिए सेम है। और एक कलर कॉम्बिनेशन में एक इसमें बैठे हैं, तो एक सही में एक संयोग और इत्तेफाक है। जब आपातकाल इमरजेंसी की बात आती है तो अक्सर यह कहा जाता है कि आयुर्वेद का यह काम नहीं है, लेकिन आपने इस चुनौती को, एक संभावनाओं को व्यवहार में सिद्ध किया है। और आपके इस अनुभव के आधार पर हमें एक ईमानदार प्रश्न आ रहा है सर, कि क्या इमरजेंसी और असाध्य व्याधि के बीच में आयुर्वेद में कोई वास्तविक सामंजस्य है? बिल्कुल, इमरजेंसी और असाध्य रोगों में डायरेक्ट कोई सामंजस्य नहीं है, लेकिन असाध्य अवस्था में जब इमरजेंसी तैयार होती है, इमरजेंसी क्रिएट होती है, तब उसको हम मैनेज करते हैं। लेकिन इमरजेंसी इज नॉट इक्वल टू असाध्य बीमारी। और असाध्य का मतलब क्या है, पहले हमें ये समझना होगा। तो बहुत सारे, मैं लेक्चर्स में जब जाता हूँ तो बाद में लोग मुझे पकड़ते हैं कि सर आप तो जो है ना, क्रिटिसिज्म के रूप में, कि सर आप तो जो है चरक सुश्रुत बागवट से भी ऊपर हो गए। मैंने कहा नहीं हो गया भैया, कैसे क्या हो गया? बोले उन्होंने तो इमरजेंसी का वर्णन नहीं किया यार, नहीं बोलते हैं। आप कैसे, आप तो ऐसे ऐसे केसेस को बचा ले रहे हो जो बचने लायक नहीं थे, असाध्य थे। असाध्य तो हमारे आचार्यों ने भी बोला है छोड़ने के लिए। मैंने कहा बिल्कुल बोला है, लेकिन असाध्य की परिभाषा आपको पहले शास्त्र से पढ़नी पड़ेगी। और असाध्य की परिभाषा है कि जिस रोगी में, जिस व्यक्ति में पूरे पूर्व रूप, सारे के सारे, सारे लक्षण और सारे उपद्रव दिखाई दे रहे हो, तब वो असाध्य है। तो मतलब उदाहरण के लिए रक्त पित्त के 5 पूर्व रूप हैं, यदि पांचों के पांचों पूर्व रूप दिख रहे हैं, या राज यक्षमा के एकादश लक्षण हैं, तो एकादश लक्षण हमें पूरे दिख रहे हो, तब वो असाध्य की अवस्था में आएगा। लेकिन यहीं पर आचार्य नहीं रुके, उन्होंने बोला नहीं, इतना भी जरूरी नहीं है। इसके आगे एक बात और है, यदि पेशेंट की अग्नि मांद है, अग्नि नष्ट हो गई है, तब वो असाध्य होगा। तो अच्छा वैद्य और प्राण अभिसरण करने वाला वैद्य सबसे पहले अग्नि पर कार्य करता है, और यदि उसने अग्नि को दीप्त कर दिया तो असाध्य को याप्य, और याप्य से कृच्छ साध्य, और कृच्छ साध्य से साध्य बना देता है। ये मैंने आपको करके दिखाया है। थैंक यू सर। और एक प्रश्न है, जब आप कोई भी प्रैक्टिशनर, नए प्रैक्टिशनर, डर इस लगता है कि जब हम इमरजेंसी के पेशेंट हैंडल करते हैं तो हो सकता है 100 पेशेंट में से 98% हमसे बच जाए, लेकिन 2 पेशेंट मर भी सकते हैं। तो ऐसे में आपको कोई लीगल इशू आया क्या? ये पूछने का मेरा एक कारण है सर, मैं उसकी स्टोरी 1 मिनट में बताना चाहूँगा। मेरे पास ऐसे ही एक पेशेंट आया था, 92 ईयर्स ओल्ड।
फैमिली हिस्ट्री ऐसी थी कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। पेशेंट एडमिट हुआ, उनको वेंटिलेटर वगैरह सब लगाना नहीं था, वो डिस्चार्ज लेके आए। फिर मुझे बोले आप ट्रीट कर सकते क्या? मैंने लीगल कंसेंट लिया, सब कुछ हो गया। पेशेंट 2 दिन तक जीवित रहा। 2 दिन के बाद पेशेंट की डेथ हो गई। डेथ हो गई तो मैं जब नया प्रैक्टिशनर था तो डर गया। पेशेंट के फ्यूनरल में मैं चले गया, तो वहाँ पे सब जन मुझे पॉइंटेड कर रहे थे कि ये डॉक्टर की ट्रीटमेंट चल रही थी। मैं तो डर गया, अभी सब मिलके मुझे मारने वाले हैं। लेकिन मैंने देखा कि उसके 1 महीने के बाद मेरे प्रैक्टिस में 25% का राइज आ गया। यानी लोगों को ये पता चला कि इमरजेंसी के पेशेंट भी ये डॉक्टर ठीक करते हैं, देखते हैं। तो ऐसे केसेस में आपका क्या अनुभव है? आपको कुछ लीगल एक्शन का सामना करना पड़ा क्या? बस आपसे एक गलती होगी कि आप फ्यूनरल में चले गए उसके। आप देखेंगे कि डॉक्टर कभी भी सोशल नहीं हो सकता है। डॉक्टर के साथ मजबूरी है, वो सोशल नहीं हो सकता है। उसको हमेशा एक पर्दे के पीछे रहना पड़ता है, और पर्दे के पीछे से वो गेम खेलता है, राइट? तो जब हम एक्सपोज करेंगे तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। तो दैट इज ऑन लाइटर मोड। यस, बाय द गॉड ब्लेसिंग्स ऑफ धनवंतरी एंड माय गुरु जमदग्नि सर, अभी तक तो सर ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा है मुझे। लेकिन ऐसी क्वेरीज कई बार आती हैं, ऐसे कई बार कंसर्न्स होते हैं लोगों के, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। हाई रिस्क कंसेंट हमेशा लेना है, कंसेंट के बिना काम नहीं करना है, जो कि सर ने भी लिया था। और ये तो चलता ही रहता है सोसाइटी में, कभी किसी को फायदा होगा तो अच्छा बोलेगा, और कभी खराब होगा तो डॉक्टर का काम ही ऐसा है, जब तक आप अच्छा काम कर रहे हो और पेशेंट अच्छा हो रहा है तब तक आप भगवान रहते हो, और जैसे ही कुछ हो गया तो आप शैतान भी तुरंत बन जाते हो। तो वो उसकी नज़र में कुछ भी हो सकता है। बट यदि आपकी काउंसलिंग अच्छी है, आपकी अप्रोच अच्छी है, और आप एक ब्लूप्रिंट के साथ काम कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आप अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं, तो देयर इज वन सील्ड अराउंड यू। यस सर, वेरी राइटली सेड। तो एक अच्छी नीयत, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि अच्छी नीयत से आप काम कर रहे हैं तो एक सील्ड आपके अराउंड में बन जाएगी, वो आपको बचाएगी। बाकी जीवन तो फिर भगवान के हाथों में है, प्रारब्ध को तो कोई नहीं बदल सकता। वो कभी होगा तो उससे डरना क्या, जब होगा तब फेस कर लेंगे। अभी तक तो काम कर ही लेना हम, राइट? तो सर ये तो कंसर्न हमेशा ही रहता है, और यस सर। ये फील्ड ही ऐसा है, इसमें तलवार हमेशा लटकती है हमारे ऊपर। यस सर, यस तो डेफिनेटली। इसके साथ तो जीना और इसके साथ ही मरना, यस। ऐसा है। सर अगला सवाल केवल एक चिकित्सीय जिज्ञासा नहीं है, पर एक छोटा सा व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ा है। मेरी एक करीबी दोस्त थी, बीएमएस डॉक्टर थी, जो एकदम स्ट्रेस में थी और एक्यूट पैंक्रेटाइटिस से उसकी डेथ हो गई। सो वो आईसीयू की सारी पीड़ाएं, वो दर्द, वो हम लोगों ने बहुत करीबी से देखा है। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि सर आयुर्वेद में एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के लिए कुछ इलाज है क्या, और ऐसे कुछ केसेस आपने एनकाउंटर किए हैं क्या? बिल्कुल। अक्यूट पेनक्रेटाइटिस में और पेनक्रेटाइटिस में आयुर्वेद से अच्छा इलाज किसी के पास नहीं है। और मैं तो सीधा बोलता हूँ कि किसी भी चीज़ का आयुर्वेद से अच्छा इलाज किसी में नहीं। तो बिल्कुल पेनक्रेटाइटिस अक्यूट कंडीशन में आप पेशेंट को बहुत अच्छे से मैनेज और ट्रीट कर सकते हैं, बट देयर इज प्रोटोकॉल कि हमें क्या फॉलो करना है प्रोटोकॉल। तो अक्यूट पेनक्रेटाइटिस वेरी सीरियस एंड फेटल डिसीज, इसमें पेशेंट 7 डेज के अंदर फेटल हो सकता है। लेकिन यदि राइट अप्रोच की जाए तो बच भी सकता है पेशेंट। लेकिन कौन बचेगा, कौन जाएगा, ये हमें भी पता नहीं होता है। बट डिटोरिएशन किस प्रकार से हो रहा है और हमने पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया है, इस पर डिपेंड करता है। यस, मैंने इसके कई अक्यूट पेनक्रेटाइटिस के पेशेंट को ट्रीट किया, और बच्चों के में ट्रीट किया है हमने, तो जहाँ पर गॉल ब्लैडर स्टोन भी है, पेनक्रेटाइटिस भी है, और वहाँ से जॉइंटिस भी है पेशेंट को, और वहाँ से हम बच्चों को बाहर लाए हैं, पेशेंट्स को बाहर लाए हैं, और वो आज डूइंग वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1 साल का प्रोटोकॉल होता है, 1 साल के बाद पेशेंट ऑल इज वेल। सर वैसे आपके क्वेश्चंस, हमारे क्वेश्चंस और आपके आंसर चलते रहेंगे। हम जैसे आपको चिट्ठी आई वैसे पॉडकास्टर को भी चिट्ठी आ गई है कि समय बहुत कम है, फिर भी एक रैपिड फायर में कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं आपको। क्या इमरजेंसी मेडिसिन में जो हमारे संहिताओं में अगत का उल्लेख आता है, तो वो अगत का कुछ इंपॉर्टेंस है क्या? वो अगत हम यूज़ करते हैं क्या? यस, हमने दिखाया आपको कि सेरेब्रल ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस के केस में बिलवादी गुलिका का हमने धूमनस से कराया। क्यों कराया? क्योंकि देयर इज माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स वो कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ होता है, ये सब हमें कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, दैट इज अगद। नॉर्मली क्या होगा, हमें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये बैक्टीरियल है, वायरल है। जैसे हमने एक ARDS का केस भी दिखाया, तो उसमें भी वही डाउट है कि वायरल है कि बैक्टीरियल है। हमें वो सब जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मानना है और आयुर्वेद कहता है कि जो मीडिया है उसमें जर्म्स एक्टिवेट होते हैं, ना कि जर्म्स के कारण मीडिया तैयार होता है। तो वी ट्रीट मीडिया। तो जिस मीडिया में वायरस, बैक्टीरिया या जर्म्स तैयार हो रहे हैं, उसको हम मीडिया को ही हटा दे रहे हैं। यदि मीडिया को हटा दिया तो वायरस का रेप्लिकेशन, बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन, इंप्रूवमेंट, कॉलोनाइजेशन बंद हो जाता है। दैट इज द
मेन, तो यस अगत का रोल है। यस सर, थैंक यू। सर एक फास्ट में एक सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे नागपुर रीजन है, विदर्भ रीजन है, जिसमें खर्रा, तंबाकू और ये सेवन बहुत अधिक चलता है। और हमारे पास एज अ शला की पेशेंट ऐसे आते हैं कि सब सब जगह घूम के आते हैं और लास्ट में आते हैं कि अभी खाना पीना नहीं हो रहा है और दर्द सहन नहीं होता है। तो सीए टंग की जो एडवांस स्टेजेस रहती है उसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है सीए टंग या कोई भी कैंसर के बारे में बात करना। यस, बट इनिशियल ट्रीटमेंट इज इम्पोर्टेंट। प्रॉब्लम क्या होता है कि पेशेंट कीमो रेडियो सब कराकर आ रहा है और फिर लास्ट एज ए ट्रायल के लिए आ रहा है, दैट इज प्रॉब्लमेटिक इन केस ऑफ कैंसर, क्योंकि वहाँ पर मेटास्टेटिक बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। कीमो रेडियो यदि हो चुका है पेशेंट को तो इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा हैम्प होती है, उसकी डिक्रीज होती है, और आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हैं वो इम्यूनिटी को इंक्रीज करके बॉडी को रिपेयर करती हैं, राइट। लेकिन टारगेटेड मेडिसिन भी है हमारे पास, लाइक भल्ला तक एक बहुत अच्छी मेडिसिन है हमारे पास, जो टारगेटेड मेडिसिन है, जो सीधा सेल्यूलर लेवल पर टारगेट करती है। तो यस, वी कैन ट्रीट, नो मेटास्टेसिस हो गई है, देयर इज ओनली पैलेटिव केयर। थैंक यू सर। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं अभी। हमारे प्रैक्टिशनर के लिए और यंग स्टूडेंट्स के लिए कि आपकी इमरजेंसी किट के अंदर कौन से ड्रग होना चाहिए? व्हाट शुड बी द मैम एक रूट? स्लाइड होगा उसमें इमरजेंसी किट का, इसी आगे होगा। जैसे कि एलोपैथिक लोगों के पास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूट जो होता है राइल्स ट्यूब होती है, क्या आपने अन्य मार्गों से मेडिसिन देके देखी, जैसे बस्ती के थ्रू, सबलिंगुअली, कान में डाल के, या फिर अंजन करके, ऐसे कुछ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप बदल सकते हैं क्या? यस यस और यस। हमेशा इमरजेंसी वाली मेडिसिन कॉस्टली ही होती है क्या? ऐसा कुछ है? इसके बारे में आप शॉर्ट में बताइए नहीं सर। बिल्कुल, जितने भी रूट्स हमारे पास हैं वो सबसे हम मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। बस्ती में भी हमने रसौसदी का प्रयोग किया है। बस्ती सेमी कॉन्शियस अनकॉन्शियस पेशेंट्स, आईसीयू के पेशेंट्स ने ड्रिप मेथड से बस्ती की है। नॉर्मली क्या होता है कि बस्ती अनकॉन्शियस पेशेंट्स में हम नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम ड्रिप मेथड से बस्ती शुरू करवाते हैं। तो अभी एक रिसेंट केस था उसमें हमने की है। तो यस, अलग अलग रूट से हम प्रयोग करते हैं मेडिसिन का। और इसको जूम कर सकते हैं क्या स्लाइड को? महंगी तो होती हैं मेडिसिन, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं होती हैं जितनी और पैथीज की हैं। ऑल स्टूडेंट कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन किट। ये इमरजेंसी किट का पेपर है, आप लोग ले लीजिए। कभी भी आपको प्रॉब्लम हो और ये किट आपके पास है तो मैं आपकी हेल्प जरूर कर पाऊंगा। आप मुझे कॉल करिए, मैं आपकी हेल्प जरूर कर दूंगा, लेकिन एक किट आपके पास होनी चाहिए। थैंक यू। So thank you very much, sir, for थैंक यू सर। wonderful question answer session. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Now, it is our proud privilege to felicitate our respected host, Dr. Gautam Kumar Jogad sir and Dr. Sarika Palve madam, as a token of our respect and gratitude for their valuable presence and contribution to this program. May I humbly request Dr. Sushil Patil sir and Dr. Pragati Wagmare madam to felicitate our podcast host. I request Dr. Jogar sir and Sarika Palve madam to kindly accept this token of appreciation. Thank you, sir. Thank you, madam. With that enlightening to the day, we now move ahead to our next session. If the first session emphasized Ayurveda in acute emergency care, this next session takes us into the deeper realm of chronic and critical illness management, an area where long-term vision, rejuvenation, and strategic application of classical principles are essential. It is now I request Dr. Snehal Garate ma'am to escort Yogesh Bendare sir.
It is my great privilege to introduce our next esteemed speaker, Vaidya Yogesh Bendare sir. Yogesh Bendare sir is a gold medalist in Ayurvedic pharmacology and globally recognized authority in the field of Ayurveda, a rare blend of deep devotion to classical Ayurveda, advanced translational medical acumen, and global clinical expertise. Sir is honored as CRAV Guru, invited by royals and royals, peers of nations. Sir was granted an independent medical license to practice Ayurveda in UAE. A visionary entrepreneur, founded and manages 5 healthcare ventures, includes 3 clinics: Rasayu Ayurved Clinic, Rasayu Cancer Clinic, Dyumna Women's Clinic, and treated 1.5 lakh patients. Innovator and researcher, founded Rasayani Biologics Private Limited. Sir is authored of 47 peer-reviewed publications and hold 43 patents. Sir is esteemed member of Global Oncology Forum. Today, sirs will be speaking on the very significant and thought-provoking topic, pragmatic Rasayan-based approach for successful management of chronic and critical illness, including cancer. We are truly honored to have you with us, sir. I'm handing over microphone to Vaidya Yogesh Bendare, sir, and request him kindly share valuable insights with us. अच्छा ते सेंट्रल ओके आणि ओके आणि माझा लॅपटॉप कोण ऑपरेट करते अच्छा दिले मग मी पुढे त्यांना सांगायचं का पुढे करा असं का माझ्याकडे आहे हां खूपच लोंबतंय परफेक्ट ग्रेट येस Namo Nama. Am I audible till the end? Thank you so much for the organizers for giving me this opportunity to talk and share in front of you. May I request first question that how many of you are actually students, UG and PG, and how many are the practitioners? Students, can you please raise hands? Okay, thank you so much. This will decide me to talk on emphasis on which topics. So today we are going to share about what Rasa Shastra is doing, Rasa Shastra can do, and what is the potential of Rasa Shastra not only in India, but all over the world. Yes, you heard rightly, the Rasa Shastra's potential, it contains metals, into bracket, heavy metals. So after passing and getting admission to Rasa Shastra MD, we used to do practice simultaneously. And the first choice of medicine in our country is Western medicine. We all know that, and we have to accept that. Unless we accept certain facts, there is no point of improvement possible. So including my family members, everybody, something goes wrong with the health, they goes to the allopathic doctors. Nowhere Ayurveda is around. And it was very painful for an Ayurvedic graduate to face this reality.
So how to face? So at that time, around 30 years back, we decided to work only on those conditions where Western medicine is either having some limitations or no treatment or management is possible, or the treatments which are available are not affordable to my country's citizens. So this is the intersection set we decided to work, and after 30 years working in chronic and critical illnesses, whatever we learned, I would like to share the smallest part of the iceberg we can say. So what we are going to share today is the pragmatic approach or the facts about Ayurveda or healthcare, you may say. Is research really needed? Because many of the times it is seen and talked that Ayurveda is Sampurna, Ayurveda is Paripurna. We don't want to do any further research in Ayurveda because everything is mentioned in Ayurveda. I don't want to get into the debates of these because this is not the forum for that. But the question that's why is whether research really is needed in Ayurveda. Rasayan for chronic and critical illnesses, which is our main topic. What Ayurveda says about it. Why Rasayan? Because everybody is now focusing only on Panchakarma. I never did Panchakarma. I don't understand Panchakarma. I never studied Panchakarma. I don't say that it is not important, but that's not our strength. So irrespective of any illness, we treat it with the help of Rasa Shastra. Rasayan applications to Chikitsa. Vyadhi Pratyanik Rasayan is the important thing. Then case studies and our publications. So these are pertinent questions I was referring to. Why BAMS graduates do not practice Ayurveda? My batch, it was government college, government aided college, Tilak Ayurveda. We had 100 student strength. More than 95% of my colleagues and peers, they do not practice. They chose Western medicine while we used to study, and they decided they are not going to practice Ayurveda. They decided they are going to practice Western medicine. It was very painful that why my all friends have not chosen Ayurveda. What is the reason behind it? That's one, which are the stakeholders of our science. And when it comes to the society, why society's first choice of medicine is not Ayurveda. This was 30 years back. Even today, it is the same. So we need to do a very stringent, we call it as self-introspection. So if we look at the history, was Western medicine killed Ayurveda? When we were being ruled by British people, do you think that they used to visit every home and killing Ayurveda? Do not take Ayurvedic medicines, take our medicines. Was that the fact? Barring few restrictions by British people at that time, it was not the fact. Pharmaceutics, we have not taken seriously at all. When we prepare kadha, we don't know what is the medicine content. We fairly rely on n number of other things. We don't know the strength of a flame. We don't actually understand the time for boiling. So many intricacies are there. Ambiguous yet open-ended. We believe that we are doing right things, but are we really doing right things? It's very important to know. Understanding about current health challenges. We are so much overwhelmed with our science at times that we don't realize that what is happening around. Ayurveda is Ashtanga. That means the specialization was there in Ayurveda since the beginning. Till today, are we doing specialized practice? Answer is still no. Are we following Ayurveda? This proves that we are not following Ayurveda. Can we give reproducible and consistent results? This is the most important, pertinent question being asked by society and our peers from Western medicine. And one more most important thing, reproducible, consistent, and measurable results. We feel that patient visits our clinic
After 2 weeks, he feels better. Is it measurable? Practice is fine. That is called as vyavahar. We are going to look at that. But are these our results given by Ayurvedic medicines can be measured is very important. Answer to all above is yes. But is it the reality? No, even though the answers are yes. So what we have decided 30 years back, that what we are going to do with this noble science, indigenously grown science, that to contribute towards the sustainable well-being of people by promoting globally such eternal principles, Shashwat Ayurveda, and practices of Ayurveda that can be corroborated by modern science or real-world evidences, because not everything is complete. There are n number of things which cannot be backed up by modern science. There are no parameters which are yet needs to be invented, but they are seen in reality. So that is where this is what our mission is. So do we really need research? Everything is mentioned. In spite of Charak, which is considered as a physician's main physician, Sushrut Samhita was written. Even though the Sushrut Samhita was there, Vagbhat was there. Even though the Bruhatrai was there, Lagutrai was there. Even though Bruhatrai, Lagutrai was there, n number of Rasashastras, Granthas were evolved. That means at that time, our sciences were so developed and developing. Now, almost, at least we know, in last 100 years, we have become stagnant. We have not introduced anything new to our science. So when we look at the samprapti, a sudden drastic change in lifestyle, because Nidan Panchak, without Nidan Panchak we cannot practice, but reality is lifestyle changes change to the hetus. New hetus have been introduced. Once the hetus are new, the causative factors are new, the samprapti is inevitably new, which is not necessarily to be mentioned in any of our granthas. New samprapti leading to new disorders. So everything is new, then why can't the treatment modalities, principles, drugs, combinations cannot be new? The most important thing which is lacking in Ayurveda's time, please listen this carefully, and I don't want to demean Ayurvedic text at all, but this is the reality of today's world, that the biggest new hetu has been introduced to yours and my daily life of our clinical practice is allopathic medicines. When we treat chronic and critical ill patients, everybody of them is either taking antihypertensives, oral hypoglycemic agents, anti-inflammatory thing, NSAIDs, steroids, chemotherapy, radiation, and then visiting Ayurvedic clinic. Medicine has a virya, potency. So it acts on certain things. It leads to certain side effects. But when it leads to certain side effects, can't these side effects be called as hetus for newer diseases? Because Western medicine acknowledges that, yes, we create new diseases while treating or managing one particular disease. But Ayurveda is not saying that. Ayurveda believes in Vishuddha Chikitsa. So this is very important factor. And hence Ayurveda needs to be demonstrated as evidence-based scientific approach to establish as a rational system of medicine. Because most of us still believe on Google or Wikipedia, where it is mentioned that Ayurveda is a pseudoscience. So it becomes our duty to answer it rationally. So what is the need of the hour? Safe, well-tolerated, effective medicines, therapeutic strategies, not just therapies, vital organ protection, prediction, and preventive medicine. Fast acting, nobody has time today. Then prevention to disease progression and severity, patient-centric approach, easy to administer, no complexities,
consistent results and reproducible results. This is the need of today's world. And hence, I always divide my talk into three fundamentals or three stages: Tattva, Shastra, and Vyavahar. So what are the tattvas, fundamental principles explained in Ayurveda, are shashvat in nature. The application of these fundamentals, where it gives reproducibility, even if this is being used by somebody else, all across the nation or all across the world, it should be reproducible. Then it is called as Shastra. And when it is being used by medical professionals at different levels, and society is being benefited, which is termed as Vyavahar. So these are all theoretical things. I don't want to get into this because you guys are well known about these things. But just to mention, immunity is very important. Rasayan, which is one of the 8 branches of Ayurveda, is being completely ignored by our fraternity. So principles of clinical pharmacology, the important principle which I would like to highlight in today's lecture is यद दोष प्रत्यनिकम तत् न व्याधि प्रत्यनिकम किंतु यद व्याधि प्रत्यनिकम तद अवश्यम दोष प्रत्यनिकम. So what is important, what is bigger is vyadhi, not dosh, because dosh leads to vyadhi. Once we target vyadhi, it necessarily targets dosha. I am sure this is very difficult to understand most of the practitioners, but this is what our developing science has told recently. You don't find this approach in Arsha Granthas as such, as clean as mentioned in Madhav Nidana. But this is, and hence Shastra needs to be Pravahi. Bahukalpam Bahugunam Sampannam Yogyam Aushadam. And the most important thing is dose. Alpamatropayogitvat, Aruchera Prasangataha, Kshipram Arogyadayitvat. We don't have time. Aushadibhyo Adhiko Rasaha. So while discussing about all these Shashwat principles, what we have delivered is that certain principles in applied form. For example, number 1 principle is Samprapti Bhanga from the root. When British used to rule us, they introduced antibiotics, which were not there in our country at that time. All infections were being treated by Ayurvedic medicines, and there were some publications and some data is in public saying that Ayurveda cannot handle these infections. That's why there is need of antibiotics. The moment it was antibiotic era, the moment it was introduced at that time, whole world, medical world was very happy, and they were so confident that now we have won the war against microbes. Ayurveda couldn't do it. Naturally, Ayurvedic physicians of that time, they were depressed by the extraordinary results of antibiotics, because Ayurvedic medicines couldn't handle vigorous infections at that time. So why these chamatkruti purna results antibiotics could do? Because they understood samprapti from different angle, and they hit on the target, which is nothing but samprapti bhanga. And once the samprapti bhanga is there, immediately the disease explodes and patient starts feeling better. Can Ayurveda do it? Yes. The development of Rasa Shastra is exclusively based on this principle. Then the interesting story, couple of times I share this. Most of the time we come across with allopathic doctors, Western scientists from physics, chemistry, biology, biotechnology, nanotechnology, quantum physics, and so on. And the first question, which is a very logical question, that how Ayurvedic medicine works. And then we get confused. How to answer this question? Ayurvedic medicine works on doshas, dhatus, sampraptis, malas. Whole world comes in our mind how to answer this. At times,
you have to be little smart also. So during one of the discussions, somebody asked me how it works. I said it works. That time, this is maybe 20 years back story. I replied it works on DNA. So when we say that it works on DNA, it becomes the duty of the other person to prove that it won't work on DNA. But 20 years back, this logical answer was given, and 2 years before, we got the documented result of that by Dyumna Women's Clinic. And here is the publication link, that there was a couple who was suffering from infertility, and they were told that they will never get their own child because the males, and unfortunately they were doctors, and it was not one case, there were 2 cases like that. The male partner has fragmented sperms. DNA fragmented was there in the sperms, and it was not possible because how to correct DNA fragmentation, nobody knows in the Western world. Dyumna Women's Clinic treated these 2 doctors, their wives are also doctors, and then did their sperm analysis, sperm test, and both the cases became absolutely normal. The sperm count and sperm motility, sperm qualities, DNAs were tested, and they became normal. This case was published. Here is the link. This is the world's first documented case of DNA fragmentation being treated by Ayurveda. It's not the case of only Ayurveda treated, even Western medicine has not documented this case, and this is the power of documentation, and we need to take Ayurveda to these levels. Then the other things comes as a target-oriented. We have seen that the alpamatropa taruchera prasangata. Targets are given in Rasashastra, explained in Rasashastra very well. We need to find out between the lines of our granthas. Medicine should be targeted. You think that the Western medicine has came with the targeted therapies? No, we knew it since beginning. So here is a medicine called Timirex R. We do have the international patent for that. This is world's first medicine to treat diabetic retinopathy or hypertensive retinopathy. So retinopathy is the biggest cause of blindness all over the world. These patients are advised to go for intraocular injections directly or laser, and they have to keep on taking these injections every month, later every 3 months, maybe 5 or 6 injections per annum. Per injection is cost about 25,000 rupees to 1 lakh rupees each. Am I living in the country which is so rich? My citizens are that rich? They can afford 25,000 a month or every 2 months 25,000? Answer is no. And I am blessed with Ayurveda, which is indigenously grown science. Can Ayurveda do something? Because this is a limitation of science, limitations of society. Because society cannot afford, science cannot make it affordable. So it is our duty how to make it affordable, and we have come up with the world's first orally given medicine which acts exclusively on retina. It is targeted medicine. We have done its national level clinical trial done by the super specialized doctor, vitreoretinal surgeon, who is considered to be the highest in ophthalmology. And this drug's trial has been successfully done. Before these OCT scans were taken, after the treatment OCT scans were taken, not only OCT scans, like cardiac angiography, we did the angiography of eye. You can imagine the angiography of eye is how difficult it would be. The capillaries are so thin. In spite of that, we did the angiography, which is a very, very neat, super critical techniques for that, but we did it because Ayurveda needs it. You and me as a practitioner won't need it, but our science needs that kind of litmus tests. So we did it, and now this research has been accepted in the world's biggest ophthalmic society, which is super specialized ophthalmology society, and is going to be presented in Denver in April 2026. They have invited me to present our research paper over there. This is Rasa Shastra. Then Vyadhi Pratyanik Chikitsa. Som Tajvir is the new medicine what we have introduced. When there are doshas,
dosha, dushtan, dhatun. We know this. But when there is a complexity in the doshas, dosha sammurchana, we call it as. How to deal with that? In other words, in modern medicine, there are so many disorders and the list is ever increasing. 20 years back, the list was tiny. Today, the list is so big and it is called as autoimmune diseases. How to deal with autoimmune? You have become your own enemy. How to resolve? People are taking steroids for that. Even monoclonal antibodies are prescribed, which are heavily costly. Are there any simple solutions, including RA, SLE, these kind of diseases? The simple solution for these autoimmune diseases, Somtajvir, 1 capsule 3 times a day, and see the magic after three weeks. Literally 3 weeks, you can see the magic of these drugs. So many things in cancer, disease-free survival, we can do a lot. And it can be done, it can be used since before conception. The main important thing, the name of the body, today what we call it as body, is Sharir. Do you know, everybody knows that the vyutpatti of this is Shiryate tat Shariram. But do you know that no other science in working in the health has defined human body like this? We are so super specialized and we are so best having understanding of body. Je jhistate sharir. What degenerates is body. Shiryate tat shariram. Other sciences, they are not able to define human body, boss. How can they are being able to define the diseases and able to treat that? Ayurveda is not that simple. Ayurveda is super, super, super science above all. Then why Rasayan? Because as we say, Shiryate tat shariram. Every day, we are degenerating. Since we have taken the birth, till the end of our life, body degenerates. Till the age of 20, 25, the rate of regeneration is little higher than the rate of degeneration. But degeneration persists. After certain age, the rate of degeneration is much more than the rate of degeneration. And to conquer this, to make it better in equilibrium, the best answer is Rasayan. And this is the branch. Dirghamayu smriti medam arogyam tarunam vayaha. Prabhavarna swarodaryam dehendriyam balapradam. Vak pravrittin prayatnorja balavarna smriti kriya. So this Rasayan is doing each and everything what we need. The first word is Dirghamayu. What everybody is looking for is longevity. Then the word, this is how the granthas have been written, you all know. So I am not getting into those nitty-gritties of how the granthas have been written. The most important things are written first. Then the word comes smruti. Most of the time, the smruti is considered in a different manner, that what I ate yesterday, if I recall today, is considered to be smruti. What I learnt in college days, if I recall today, is the smruti. Ayurveda is not that simple and easy. Ayurveda is extremely subtle and given extraordinary understanding about Sanskrit, use of these words, placement of these words. That's why it is placed after that. When we are in the fetal stage, when the hand is growing, who decides this finger to be developed only this length? Who decides there should be gap? Who decides the length of this second finger is different than the first one, and there should be capping to all this growth? Who decides this? Smriti. The cells has smriti. It decides that otherwise we would be like trees or ever growing, even bigger than trees. It doesn't happen. So the word smriti is very important. Let's not consider smriti as a translated as just simple as a memory, what we have done in the past and recalling that. It's not that. So we can talk hours together on Rasayana, but this is just a glimpse I am giving you so that it's kind of a teaser so you can understand the power of Rasayana. So this is how the samprapti of any disease happens, and the reversal of this samprapti is nothing but the Rasaशास्त्रीय Chikitsa. As we were talking in the beginning, that what we have overlooked over the years is the manufacturing. Why Western medicine is at that level today? Because they have taken manufacturing, pharmaceutics extremely seriously. And we have taken it
very lightly, I am sorry. Because when we practice, I make my own medicines, I make myself diagnosis, I still do snehan to my patients, I still give basti to my patients. I am the king of everything. This is now how science needs to be developed. On the contrary, I understand that we are at a very nascent stage where we want to do everything by ourselves. And Western medicine has grown up because they have developed their super specialties, what society needs. The society needs these things. And we have not reached to that level. And the most important thing, manufacturing, especially not only Rasa Shastra, even Arsha, Chavanprash, if we make 3 different batches of Chavanprash, can anybody guarantee me that 3 batches will be consistent? If we make 3 consistent batches of Arogyavardhini, can anybody guarantee me that 3 batches will be consistent? I will give you the guarantee that there will be no consistency, because we did it. And we found that these batches are not consistent because there are n number of, not couple of, n number of confounding factors. It's not the case with Western medicine. If you look at the paracetamol, all over the world, paracetamol is same. So pharmaceutics needs to be taken very seriously. Then only will not only be deliver safe medicines, but efficacious medicines. Because world wants only 2 things, safer medicines and efficacious medicines. This is the most important factor I was trying to tell you, that Vyadhi Pratyanik and Dosha Pratyanik, we have a fundamental principle, Shashvat Tattva, Vyapya Vyapaka Bhava. What is Vyapak? What is Vyapya? Here it is clearly mentioned, doshas are Vyapya in nature. But when we look at patients, every time we think, वात वाढलाय, पित्त वाढलाय, कफ वाढलाय, वात आणि पित्त वाढलाय, मग त्यांना पॅसिफाय करण्याची औषधं मला द्यायची आहेत. That is dosha pratyanik chikitsa. It can help you definitely, it can help patient, but it is a management, it is not the treatment. प्रयोगः शमयेद् व्याधिं यः अन्यमन्यमुदीरयेत् नासौ विशुद्धः शुद्धस्तु समयेद्यो न कारयेत्. This kind of approach is not according to what is Vishuddha Chikitsa expected by our science. Hence, Vyadhi Pratyanik Chikitsa is what Ayurveda is expecting. So when we look at these, treat these chronic and critical patients, there should be strategy, always. Because when patients are coming to us, we have patients in clinic who have given right from 2 to 3 days to 2 to 3 months. And that is the challenges every day we are treating in last about nearing to 30 years. This year we are celebrating 30 years of our clinics, and not a single day that we have not treated these such kind of critical patients. So unless patient leaves, you cannot treat. So the most important target is Ojo Rakshan. Then New Age Nidan. This is the word I use. It's not only the Nidan. New Age Nidan and Samprapti Ghatak. Srotas, Sroto Moola. Agni, digestion, metabolism, Dhatu, Doshas, Malam, Nirmiti and Mala Nissaran. We hardly look at these things of Malam. When I say that the Western medicine also acts as a hetu for multiple diseases, that needs to be considered by Ayurvedic physician. When somebody takes the antibiotics, fulminant infectious patient, septicemia patient, he is on amikacin, IV antibiotic, and then recovered, and then in spite of that, with couple of things, he is immediately visiting to your clinic. For example, after getting out from the ICU. Can we think that there are trillions of bacteria in the body who were being killed by amikacin like antibiotics? What happens to those dead bodies? Where those dead bodies goes? The trillions of bacteria, dead bacteria, where are they going? Whose responsibility is that? Can't we consider that? How do we study that? That's why it's very important.
to focus on mala. This is the new age mala also, which is not explained. When we target certain therapeutic things, then there should be therapeutic outcomes. So what are the outcomes? Protect vital organs, improves functions of vital organs, reduces disease symptoms, symptom burden, reduces risk of disease progression, because if there is a diabetic patient, 30 years of diabetic patient is likely to end up into renal failure or diabetic retinopathy or diabetic neuropathy, n number of things. So the moment that patient comes to you, your utmost duty is to stop the progression of a disease. Protects Ayushya and improves quality of life, especially in cancer patients. So few Vyadhi Pratyanik Rasayana, we are talking about Vyadhi Pratyanik. So single ingredient Rasayana, these are all single bhasmas. But these bhasmas are not generally prepared bhasmas. There is a special bhasmas because there are perfect number of puttas. We never use any bhasma below 100 putti. That's how we have to take the pharmaceutics that seriously. Perfect meter dosing. We don't know how much medicine we give to our patients. पुडीमध्ये किती औषध घालतो? स्टुडंट असतो तो घालतो, आम्ही चमच्यानी घालतो. Are we in healthcare or we are in food industry? It's not like that. So metered dosing is very important. Matra is a big thing explained in Ayurveda. Let's not forget it. Then perfect convenient packaging. You cannot take granted today's patients. You have to help them, and it should be patient-centric. And then only you should be able to predict the perfect outcome of your treatment, the therapeutic effect. Hirak. We all know Hirak Bhasma. We are using Hirak Bhasma. Here you can see that more than 1 crore of capsules are being used. 1 crore. And the dose is exactly what is mentioned in Grantha, 1/10 of a gunza, 12.5 milligrams. This Hiraka is made with 200 putties. 200 पुटं लागतात हे हिरक बनवायला. एक पुट द्यायला ॲव्हरेज 3 ते 4 दिवस लागतात. 200 पुटांना किती दिवस लागतात? You can imagine. But if you want to establish Ayurveda as a rational science, and if you are going to treat chronic and critical illness patients, then your weapons should be that powerful. You cannot fight with world war with weak weapons, because this is world war. We are no different than world war. Everybody we are at war stage in clinic. So let me bring your attention to Rasachandamshu and Rasatarangini's differences. In Rasachandamshu, the Granthakar mentioned Hiraka is Ayush Pradam. What is Ayuhu? We understand what is Ayuhu. Sharirendriya Satvatma Sanyogodhari Jivitam is Ayu. Sharir, Indriya, Sattva, Atma. Linear connections of all these is nothing but Ayu. So Hirak does it. So we live. So whenever there is a life is in danger, Hirak should be used. Ayush Pradam. And the last word is Sakalamayaghnam. It can be used. When we were at student age, we used to think that Ayurvedic medicines are mentioned so vaguely that Abra kills all the diseases, Suvarna cures all the diseases, Vanga cures all the diseases. Such a nonsense science. It took so many years for us to understand that that is all mentioned is 100% correct. The point is where it is to be used that we need to extrapolate. It is not mentioned in black and white in our granthas. And experience is the big master. So it teaches you. So Sakala Mayagnam. Whereas Rasataranginikar gives emphasis to Sumrutam Hirakam. You can get Hiraka Sakala Mayagnam only if it is made properly. And it ends with the same kind of thing, Syat Sumrutam to Hirakam. Rest is all possible. But unless the Hirak Bhasma is of highest quality, you are not supposed to get any of these results. And today, we keep calling that Ayurveda cannot give results. I don't get results. Critical illness cannot be treated by Ayurveda. No, it's not like that. I can vouch
that you just name the disease, we have power to manage or treat that disease much better than Western medicine. Panchamukta Rasayan, there is a big limitation today, that these are the limitations which were not there before. But today's time, there we don't get praval because of the environmental reasons. Pravala mukta phala shanka shukti kapardikanam samavasha bhagam pravala matra dvigunam prayojya. Praval is not available in praval panchamrut. Praval is used twice in double quantity. But praval is not available. Still we are expecting praval panchamrut to be useful. So how to do that? So we changed that, we didn't compromise, and we replaced praval by double quantity of Mauktik. And this Panchamukta gives miraculous results in many of the diseases. This is the big list. I don't want to get into the more details of these because everything will need lot of discussions. I'll be just sharing you a couple of glimpses. These are all the targets of, specific targets of Panchamukta. Then Dasma. Dasma Rasayan, you can see the combination. Ayurveda is Sarva Darshan Sangraha. Ayurveda has taken the best of Sankhya, Nyaya, Vaisheshik, Purva Mimamsa, Uttar Mimamsa, Vedanta, Jain Darshan, Bauddha Darshan. Hence Ayurveda is called as Sarva Darshan Sangraha. So Ayurveda accepted Abhav as a Dravya. Abhav. So if you look at Rasaushadhis from hundreds and thousands of granthas, you need to read those. And after that, you will understand that certain combinations are not mentioned. Certain combinations are mentioned quite frequently. And this is one of the combinations which is not mentioned because it was not the need of that time, which is 2005 years approximately back. But this is the need of the hour today. So we combined Somnathi Tamra with Hirak Bhasma, and it is a wonderful medicine we have prepared, which we are using in cancer patients. Tamra, Ekadosho Vishe, hi Tamre tu Ashtadoshaha Smritaha. Visha has one dose, one dosha, killing. But Tamra has got 8 doshas. So what is toxic? Tamra is more toxic. For Western medicine, what is toxic? For Western medicine, the toxic is lead, arsenic, mercury. But for Ayurveda, Tamra is toxic. So we need to understand that. The more toxic material, more it can be converted into Amruta. Tamram tiktam kashayam cha madhuram paketha viryashtakam samlap pitta kafapaham jathara rukusthama jantvantakrut urdhwadhap parishodhanam vishayakrut thaulyapaham kshutkaram durnama kshaya panduroga shamanam netryam param lekhanam. You name the Phalashruti and Tamra has got effectivity and efficacy. The only point, we need to make ourselves the best quality of Tamra. And when it is combined with Hirak, consider the dose. 5 milligrams of Hirak and 10 milligrams of Tamra. Milligrams, we are not lesser than Western medicine in our doses. 15 milligrams of this drug wonderfully reduces the tumors. It gives longevity to cancer patients. So many diseases. With the help of Dasma Rasayan, we have stopped, published the liver transplants advised to our patients. Because my countries, my citizens cannot afford 50 to 60 lakhs rupees liver transplant, and that too maximum survival of 5 years. We can't afford that. Can Ayurveda give the solution? Yes, liver transplant can be taken care successfully, rationally, and with the absolute normal results which are being measured by Western parameters. So these are the targets for Dasma. Then Somtaj we talked about. I would prefer, because I believe in dialogue more. So Somtajvir for multiple disorders, including the autoimmune disorders. Rasak Rasayan is 100 putty, simple jasad, nothing else, but made beautifully well with 100 putty. So it can be useful. Meha Rasayan, how to prevent the progression of diabetes to multiple levels of complications, is one of the most important Rasayan. Meheshu Santarpanam Eva Karyam.
all companies in India which are bringing the OTC products of diabetes are focusing on sugar. When you want to focus on sugar, then Katutikta Rasatmak Dravyas are enlisted from the text, made a bhel kind of thing, extracts, and given to the public. But when you use Tikta Rasatmak and Katu Rasatmak Dravyas are inevitably going to increase your vata. This is a patarpanatmak approach which is not as per Ayurvedic principles, because Ayurveda says Meheshu Santarpanam eva karyam. Santarpana is must, otherwise going for sugar management by Ayurvedic things is not the rational for Ayurveda as a science. Ankush, we use it for multiple skeletal disorders. Arpis Rasayan, cardioprotective rasayans. All cancer patients die because of heart attacks. They do not die with cancer. So we give this rasayan to almost all cancer patients because chemotherapy is cardiotoxic. Cancer leads to cardiac illnesses, and unless patient survives, whom we are going to treat? So this is the protection. Obviously, we use in lots of separate and independent cardiac illnesses. Pranvallabh Rasayan is one of the most potent rasayan we use, not only for Pranavasrotas, but Dasha Pranayatanani. I am going to share one interesting story of Pranvallabh Rasayan. A couple of people who visited our clinic might be knowing this. Young couple, his mother was around 80 plus or something like that. She had been to hospital consistently 2 or 3 months, span of 2 or 3 months, directly to ICU, and every time to ventilator. And the last time when she was put on ventilator, doctor said that now let's not do anything because age is there, nothing is supportive, and she can survive for 2, 3, 5 days maximum. The couple decided that let the death happen at home instead of hospital. So they took discharge. Same evening, they visited our clinic. They told the same story and expecting a peaceful death. We committed peaceful death. In the meantime, while she was in hospital, she was moving her leg and her femur broke away. The femur came out of the body. You can see that in the photo. And obviously, when the lifespan was given in days, not even 1 week, how to give anesthesia, how to do close reduction, open reduction, nothing was possible because life was not there. And then we use this rasayan. This rasayan is positioned, especially in advanced stage cancer patients, when Atma wants body to suffer, cannot live, and we want Atma to live peacefully without letting body to suffer. This is a very critical condition. When you work in critical illnesses, this is every day's thing which we are observing. So we developed this specific rasayan to work till Atma level. Yatha rasaha tatha Atma. This is the fundamental principle. Rasa Shastra has it. And we gave Pranvallabh Rasayan. I told him that let's start with Pranvallabh, 1 capsule a day for 1 week. Mostly she will die within a week. Then 2 capsules a day for 2nd week and 3 capsules a day. Naturally, she will not survive for 3 weeks, up to 3 capsules. See, look at, this is the bone. Femur has come out. We have given only Pranvallabh Rasayan and Gandhak Dhruti 3 drops externally. You can see how the wound has reacted. Nothing else in the world was given, not even B complex. Three days to 5 days patient survived and surviving for 20 months. She is still alive today. This is the power of Rasayan. किती वेळात आटपायचे सांगा. हां. So let me skip this. प्रेप्सा दिलं की ओव्ह्युलेशन होतं, एवढंच मी तुम्हाला सांगतो आता. अनओव्ह्युलेटरी सायकल्स
प्रेप्सा द्या. विदिन 24 hours to 72 hours ओव्युलेशन येतं. पिरियड येत नसेल तर पिरियड येतो. किती डिले असला तरी अशा स्वरूपाचं तुम्हाला टार्गेट ओरिएंटेड रसायन आहे. Protha we use in cancer. We are not going to talk more about cancer. This is the first time in the world and in the country Ayurveda has presented in such a way about disease specific and avastha specific rasayanas. All are Vyadhi Pratyanik. Gastrointestinal system, simplest disease to most complex is in the end cancer, Protha is given. Same thing with diabetic complication, the simplest one and the end stage complexity of how the disease keeps on going. Disease, then upadrav, then complications of the complications and so on, all can be treated with Ayurvedic drugs exclusively. This is neurological, this is cardiovascular, this is respiratory. We are not going to go into the details of this, but this is a case of you all people knows about it because he is from Nagpur and recently he has been awarded as Padma Shri. He is, there is some problem with the noise anyway. So he is Maruti Chittampalli. He lost his eyes. He decided not to go for the intraocular injections. He came to our clinic. He has been referred by some big name in Maharashtra, took our treatment, and lived around 20 years after that. He wrote 3 encyclopedias. Till the end, he was working 18 hours a day, never put intraocular injections, never visited for any laser treatments. This is what you can see. This is the target I was talking to you about, Timirex. These are the targets. Timirex works exactly at this level. This is the before, and look at this. It has become flat. These are the treatments given. Alcoholic liver cirrhosis, advised to go for transplant. This patient couldn't recognize me. He was in coma at that time. Sent home like a body. But then after 2 weeks, still he didn't recall that he met me 2 weeks back. And all the parameters became absolutely normal. These things are published in Indian Society of Gastroenterology and Hepatology to let allopathic people also know that Ayurveda is a scientific, can be validated on a scientific principles, and they sponsored us and they invited us, and this paper is also published in their national journal. This is diabetic nephropathy, how these are being regenerated. You can see the creatinine 7.6 to creatinine 2.07 after 6 months. Psoriasis, this image is enough. Single drug, no other drug was given, Somtajvir. That's it. Pancreatitis, this has happened in 4 weeks back. A lady came with 20-25 years of diabetes. फक्त मळमळतंय आणि कसं तरी होतं एवढंच लक्षण तिने सांगितलं. When diabetic patient says you like that, always it's a red flag. We did all the tests and she happened to be at an acute pancreatitis stage. Look, the parameters, 151, 291, 434 and 489 was her liver enzymes. After treatment, the lipase and amylase acute pancreatitis has been taken care at OPD level. Her daughter-in-law was doctor. She advised her, आयुर्वेदाच्या नादी लागताय, ICU मध्ये जा ताबडतोब मराल तुम्ही, या शब्दात त्यांना सांगितलं होतं. After 2 weeks and 4 weeks of the treatment, 45 days, she became absolutely normal. Cancer, let's skip cancer because it's too much to talk about cancer. The only point I want to stress over here, do not call yourself as I am treating cancer by Ayurveda to support. No. Ayurveda can treat cancer independently. That Ayurveda has a power to treat cancer independently. Do not call yourself as a supportive therapist. You are super specialist. Even our undergraduate person is super specialist. Our undergraduate people are doing what neurologists can't do, what cardiologists can't do, what ENT specialists can't do. You guys are doing every day. Why you are calling yourself as a supportive doctors? You are not less than their super specialists. Forget about our MDs and our PhDs.
This is a very interesting story. I want to skip it. These are all cancer patients. These are cancer stories of patients. Now, Rasayu, for the first time in the world, taking Ayurveda as a global platform of oncology and chronic and critical illnesses as a therapeutic science, not as a supportive science or alternative. And these are the publications, our global publications. Unfortunately, India is yet to come up on a research map globally. We have a long way to go. But we chose to present our work on the allopathies or Western medicine's biggest platform, whatever it is. So here the impact factors, Indian journals are hardly has, couple of journals has hardly has impact factor 1, 2, 3 single digit. But our publications are in the impact factor of 45, 65, 16.7, total publications are nearing 50. We have presented Ayurveda on a global platform in more than 101 international conferences, 30,000 cancer patients, more than 100,000 non-cancer patients, 15,000 women suffering from infertility, PCOS, and so on. Rasayani Biologics has these patents. Ayurveda Rasayani has got sanctioned products 480. And what we understand is that nature is considered to be the biggest platform for research. We even didn't skip that. Ayurveda, our research has been published first time in the Nature, in the one of the most renowned platform. This is very recent publication. We'll end our talk today over here. So evaluating the objectives for breast cancer patients. One of the doctors from AIMS called me after reading this, and he said, "What you guys are doing?" I said, "What? Something goes wrong." I thought that he is going to criticize me. He said, "This is probably the biggest research ever happened in India for this stage of breast cancer patients. And it is being published in Annals of Oncology with a very high impact factor. This has been showcased in Singapore. And we have developed a software. This software gives you answers to each and every question in your mind. What dose Ayurveda works, whether Ayurveda is safe, whether Ayurveda is nephrotoxic, whether Ayurveda is neurotoxic, whether Ayurveda is hematological toxicities are seen, whether Ayurveda is efficacious, Ayurveda is useful at what stage. You name the challenge which is being posed by allopathic doctors, by any scientist in India, in the world, one software will give you the answer. And we are giving this software to every stakeholder to boost our science as a rational science freely. And that is how we are serving this. So I request to join hands to take Ayurveda rationally, globally. And this is the standard end of my talk. I always do. 25 years back, when we decided to work in critical illnesses, everybody started laughing at us. You don't do Panchakarma. Everybody laughed at us. We went to Germany. We came back from Germany, and we didn't go to Germany after 6 months. Also, everybody started talking that you failed miserably because you have been not called in Germany again, because Rasa Shastra won't be welcome in Western world. But unfortunately, every month, every 45 days, I am still flying not only to the West, but to the Far East also. So people ridiculed us. Each work has to what Swamiji has said. Then opposition. How we will go ahead? Not only other people from Western medicine will stop you, our own people will try to stop us, opposed us, and then acceptance. After 25 years, we have been accepted at global platforms. We have been now understood that how to talk about Ayurveda, how to understand Ayurveda, what is the rationality, and how to showcase Ayurveda. Those who think ahead of their time are sure to be misunderstood. We were misunderstood. Ayurveda is still being misunderstood because Ayurveda is way ahead of time. Thank you so much. Thank you so much, sir, for such an in-depth
and informative and enlightening session. Your pragmatic explanation of Rasayana principles in managing chronic and critical illnesses has truly expanded our understanding of how classical Ayurveda can address even the most complex health challenges with scientific clarity and confidence. On behalf of Ayur Samagra 2026, we extend our sincere gratitude for your time, wisdom, and inspiring guidance. I request Dr. Pushpa Chhangani ma'am to felicitate Vaidya Bendare sir. Thank you so much, ma'am. Thank you. We are very pleased and obliged to have you in our session. Pleasure is mine. Yes, thank you. In hope we will meet soon and again and again. Oh, sure. Yes, thank you, ma'am. Thank you so much. With great pleasure, we move towards the podcast session. I humbly request our podcast host, Dr. Manish Bhoyar sir and Dr. Ashish Kate sir, to begin their podcast. Dr. Manish Bhoyar sir is Associate Professor at GSC Nagpur in Rasashastra and Bhaishajya Kalpana, and Dr. Ashish Kate sir is Professor in Kriya Shari Department at Indutai Gaikwad Patil Ayurved College. We welcome you, sir. तुम्ही बसा म्हणले की बसणार, उठा म्हणले की उठणार. So it's an absolute pleasure that I think I have heard Yogesh sir in 2011. And now the Rasayan concept, by seeing him and listening his thoughts in 2011 and now in 2025, it's really an absolute pleasure. The energy level, all the things are same. Being a Rasa Shastri, really, it's a 360-degree approach for all of us. Because previously, Dr. Anuj Jain, he has also talked with the emergency management with Rasaushadhi. And now you have given the how we can break the pathophysiology. So it's really, I think, what we can say, it's a really good opportunity for all of us. Moving forward, I want to ask some questions, though your presentation is giving all the answers, but we all know you have treated a lot of royals and royal peers all over the globe. So can you explore some of your experiences while treating these royals with Ayurvedic treatment? And to that, as a Rasa Shastri, I can ask which Rasaushadhis or which Rasaushadhis you use, and is there any problem while using this Rasaushadhi? Sir, please. Sir, addition to that, how you provide them Rasaushadhi in Western world? So thank you so much. The earlier was net practice, now it's actual match started. So I can answer which answers can be given in public, and I can answer certain things in private also. So it is all predestined. You cannot choose that I would prefer to choose to treat this king or queen. It's not possible. So Ayurveda is so kind to me, and we are so blessed that we incidentally happen to reach at these levels. So we started our Western journey in 1997-8 and started a hospital, 175 bedded hospital in Germany, Bad Nauheim. We wanted to establish that as a complete Ayurvedic hospital. And then, as I said, because he asked me to stay over there, and we have bought our clinic,
and I didn't have money to make the furniture and to start my clinic. So we took a halt, and in spite of this great financial offer, I declined, and then decided to practice and help our people also. But in the meantime, at that time, I used to teach to one of our charitable hospitals in Rasashala, Nanal Hospital in Pune. So my OPD was there, it's a charitable OPD. One French guy came over there, and this guy was suffering from ulcerative colitis. He had been to United States, he has taken all the treatments from Germany, and somebody told him, it's a very interesting story on his side also, which I'll skip because it will take a lot of time. That's walking on footpath, a wheelchair person told him, they were passing by and they were talking something. And he said, understanding his disease, he said, you go to Himalayas. Because there are certain people in Himalayas who treat such things. And he came to Himalaya, he stayed in Himalaya in tent for 6 months. There he realized something like Ayurveda. Then he has been referred to some doctor in Delhi. He stayed in Delhi for a couple of months, and that is where he realized that Ayurveda is something very great, and he decided to learn Ayurveda. So he came, and somebody told in Delhi that if you want to learn Ayurveda, Pune is a very best place. So he came to Pune. And while learning Ayurveda, while getting to know one of his teachers, he realized that he's suffering from ulcerative colitis, going to the toilet 17, 18 times, out of it 10 to 12 times, bleeding was there. He was 85 kgs rugby player, came down to 40, 45 kgs. Couldn't eat anything, a typical ulcerative case. And then somebody referred him that if you want to be treated, go to Yogesh, and he's my friend. So we started treating him. After a few months, he started feeling better. And he offered me, because I didn't charge him because he's an Ayurvedic student. He said after 6 months of this treatment, he gained 20 kgs of weight. And he offered me some money, which I declined because we cannot charge students. I said, if you want to pay me, go to your country and start propagating Ayurveda. So he went to France, and actually he started doing that. And then he invited me once, that saying that your desperate need is there in Paris. So we started visiting Paris. To cut the story again, in Paris, we met a guy, like we have 2-3 cars, this person has 2-3 chartered planes. And he was suffering from squamous cell carcinoma. He has been operated, and he decided, a single person like a playboy, and he decided that I'm not going to go for chemotherapy or radiation anymore, nothing except surgery, and I want to treat it by Ayurveda. He never been to India, he never heard about, he's J. Krishnamurthy's disciple, by the way. So we started treating him, and I didn't know that who was he. And he has, later I get to know that he has 6 palaces, out of that 5 palaces I used to stay, and he happened to be the partner of one of the lords who was a relative of Prince Charles. And that is how I get introduced to Prince Charles' family, and that is how I have been misnomered or became famous as a cancer specialist. That time we didn't focus at all on cancer. And then the many patients from royal families of UK started visiting our clinic. Then I shifted our base in Paris. We started a Champs-Élysées venue on Champs-Élysées, where the fashion is started all over the world. There where we started Association for the Consciousness and Knowledge of Vedic Sciences. It's a public charitable trust that time we started. And then we shifted our base after a couple of years to central London in Winston Churchill's hotel. I used to run my clinic for 17 plus years. There are a lot of lords and these Prince Charles relatives used to come. Exceptionally, I used to visit Buckingham Palace. This was a story about UK. While going directly from Bombay to London, many people started calling me that you are going from the top, why don't you come to Dubai, it is on the way, etc., etc. And I was, honestly speaking, I was afraid of that part of the world because I never been to there, and we don't know what law was there, and we were quite confident about the Europeans by the time. But then one of my friends said to me that he is industrialist, that he is going to Dubai. I said, chalo, कोणीतरी आपल्याला मिळतंय, आपण त्यांच्याबरोबर दुबईला जाऊ. And we were chatting.
as a friend in JW Marriott Dubai Dera, and we were talking about diabetic retinopathy. In the afternoon, 12:30 was there. Nobody was there in the restaurant. Only one lady was sitting one after the other table. And after half an hour, she came to us and she asked us that what you guys are talking about. I want to talk to you something. Can you treat a person? I said, no, I cannot, because this is Dubai and I don't know what Dubai's laws are there. But my friend, he is industrialist and he is an opportunist. He talked about me in such a way, in short, he marketed me, that the lady was even more enthusiastic, and she said, now I want you to treat somebody over here. Next day morning, she came with 2 cars, and then we were going, and after 35 minutes, we were driving, and then I asked, because she was in burqa. I didn't see her yesterday, I didn't see her now also, and little bit I was starting getting afraid. Where are we going? And then दबक्या आवाजात मी त्यांना विचारलं की कुठे चाललोय आपण. ते म्हणले, वी आर गोइंग टू द पॅलेस. आय सेड ओके. Then she introduced me to the Her Highness of Dubai, and her mother lost her eyes because of diabetes. She had been to United States and Germany before, couldn't see. We started treating her. After 2 weeks, she started feeling better. You know these royals. Once they want something, they want it like this. Then she wanted me to be there immediately after 2 weeks. He said, you just come tomorrow. I said, I don't have visa. Don't worry about anything. They managed my visa in a couple of minutes. I went to Dubai. She offered me 4,500 square feet built bungalow in Dera with globally roaming mobile, because I can reach to my doctor anytime. That is how they operate. I didn't charge her. Of course, she asked me every time. Then finally I said that Ayurveda is not recognized in this part of the world. Can you help me to that? She just asked someone to put the across the health minister, and it is a federal health ministry is in the Abu Dhabi. We talked, and then I have been presented for the question, the question paper. This is how I got license to practice in United Arab Emirates. Standard independent license I got 20 years back. And the last one, I don't want to elaborate that because it's too much time. We have hundreds of stories, by the way. The Saudi king called me because the prince was there, left for almost on a deathbed as Royal Marsden Hospital in United Kingdom in London, where a lot of billionaires, they stay there to get their treatment. And he has been advised that there is one doctor coming from India. Why don't you check whether he can do something? We don't know anything, because how Royal Marsden doctors will have my address. But Saudi people somehow found me, and then they sent me a nice letter, including the visa. I had been taken over there with a chartered plane. I was not, bypass the disembarkation and the immigration, etc., directly taken to the royal residence. They cared me like anything. And then we started treating this prince, which was given 3 to 5 days. He survived for 3.5 months. But this all, we have got the blessings, royal treatments, because don't forget, Ayurveda is simply great. And I'm sure any of you can even reach far more, far better than this. आपण आता सरांच्या तर त्या एक चांगल्या टॉक नंतर एक छोट्याशा काही गोष्टी ऐकल्या. आता परत थोड्याशा सिरियस विषयाकडे मी घेऊन जाऊ इच्छितो. सरांच्या रसायू कॅन्सर क्लिनिक, रसायू बायोसिस आणि यांच्यासोबत तर आपण गोव्यामध्ये पहिला एक ट्यूमर बोर्ड बनवलेला आहे. तो अय्या गोवा, रसायू बायोसायन्सेस, रसायू कॅन्सर क्लिनिक आणि टाटा मेमोरियलसोबत आहे. तर थोडं त्याविषयी सगळ्यांना सांगा. येस, कुठल्या भाषेत? प्रश्न मराठीत आला म्हणून. एनी ॲज यू चूज. नाही, फ्रॉम ऑडियन्स मराठी. जय महाराष्ट्र. तर जनरली कॅन्सरचे पेशंट ट्रीट करत असताना आपण त्यांना काहीतरी सल्ला देतो, त्यांना काहीतरी सल्ला मिळालेला असतो. बऱ्याचदा ते परस्पर विरोधी असतात, कारण पाश्चात्य वैद्यकाच्या मंडळींना आयुर्वेद नावाचं काहीतरी आहे हेच ॲक्सेप्टेड नाही आहे. त्यामुळं पेशंटला त्याच्याबरोबर पूरक तर सोडाच, पण विरोधी सूचना दिल्या जातात की आयुर्वेद अजिबात घेऊ नका. पेशंटची पंचायत होते. दिसतंय
की ट्रीटमेंट चालू आहे ती काम करत नाही आहे, दिसतंय की पेशंट सफरर आहे, पण डॉक्टरच्या पलीकडे कसं जायचं, घाबरत असतात आणि मग घाबरून दुसऱ्या ट्रीटमेंट घेत असतात. ही पण वस्तुस्थिती आहे. आपल्याकडे येतात त्यावेळेला आपण त्यांना काहीतरी सल्ला देतो, तो मिळालेल्या सल्ल्याच्या विरोधी असतो आणि कुचंबणा पेशंटची होते. वेस्टर्न मेडिसिन हे इम्पिरिकल सायन्स आहे, लक्षात ठेवा. आणि त्यांच्यामध्ये ज्या गाईडलाईन्स दिल्यात, आपल्याला त्यांचा अभ्यास आपण करत नाही. मी नेहमी सांगतो, आता परवाच आम्ही मागच्या काही दिवसांपूर्वी अशाच बऱ्याच ऑन्कोलॉजिस्टच्या बरोबर चर्चा करत होतो. त्यावेळेलाही मी हा मुद्दा मांडला की तुमच्याकडे कुठल्या अवस्थेमध्ये कुठल्या पेशंटला कुठली ट्रीटमेंट द्यावी हे सांगितलेलं आहे, पण तुमची ट्रीटमेंट केव्हा थांबवावी ह्याच्या ग्लोबल गाईडलाईन्स आहेत का हो? अनफॉर्च्युनेटली याचं उत्तर नाही असं आहे. कारण हा पेशंटचा हक्क आहे की ट्रीटमेंट कधी थांबवायची, ज्याचा मला उपयोग होत नाही आहे, कॉस्ट बेनिफिट रेशो नाही आहे, रिस्क बेनिफिट रेशो फेवरेबल नाही आहे, ट्रीटमेंट थांबवायला हवी, दुसरी ट्रीटमेंट काहीतरी उपलब्ध आहे का हे ओपन माइंडनी बघायला हवं. आणि ही पेशंटची कुचंबणा संपवण्याकरता आम्ही बऱ्याच लेवलला काम केलं, बरेच संघर्ष करावे लागले, परंतु थँक्स टू गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आयुर्वेदिक वैद्य आहेत, त्यांनी ही गोष्ट उचलून धरली. सुदैवाने ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदचं रिजनल सेंटर गोव्यामध्ये आहे. आयुष मिनिस्ट्रीने ही गोष्ट उचलून धरली. एवढंच नव्हे तर प्रमोद सावंतांनी गोव्यामध्ये राज्य सरकारला त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व केलं आणि त्याच्याकरता स्वतंत्र फंडिंगची व्यवस्था केली. आणि मग मोस्ट क्रेडिबल असणारं टाटा मेमोरियल त्याच्यामध्ये घेतलं आणि त्यांच्या पुढाकाराने आणि ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूटच्या सहकार्याने हे भारतातलं पहिलं ट्यूमर बोर्ड स्थापन झालेलं आहे, जिथे कोणीही त्यांचे पेशंट्स आणू शकतो. आम्ही आमचे पेशंट्स तिथे प्रेझेंट करतो, पेशंट त्या ट्यूमर बोर्डमध्ये उपलब्ध असतो. त्याच्यासमोर आयुर्वेदिक फिजिशियन असतात, ॲलोपॅथिक फिजिशियन्स असतात. बेस्ट काय आहे त्या पेशंटला सांगितलं जातं, पेशंटचं ऐकलं जातं आणि सल्ला दिला जातो. आणि आमच्या आता 4 ट्यूमर बोर्डच्या मीटिंग झाल्यात आणि त्या अत्यंत स्पृहणीय आणि अत्यंत एनकरेजिंग रिझल्ट्स आहेत. अँड द ब्रिज इज बिल्डिंग व्हेरी फास्ट अँड व्हेरी स्ट्रॉंग ऑल्सो. अँड आय एम शुअर की ही प्रमोद सावंत सरांची जी विजन आहे ती भारतातले इतर स्टेट्ससुद्धा स्वीकारतील असा मला आत्मविश्वास आहे आणि स्वीकारावी अशी ही विनंती आहे. तर तुमच्या या कामाला खूप खूप शुभेच्छा. मला पण एक चिठ्ठी आली आहे आता की वेळ थोडाच आहे, तरी रसशास्त्री म्हणून एक शेवटला प्रश्न मी विचारतो आपल्याला की तुम्ही आता इतक्या साऱ्या रसायनांची माहिती आम्हाला दिली आणि क्रॉनिक इलनेसचा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा आपण धातू भस्म असो किंवा कुठलेही भस्म असो हे आपण लॉंग ड्युरेशनला देतो. तर अशा वेळेस आपले हे जे नवीन मुलं आहेत, नवीन वैद्य आहेत किंवा जे प्रॅक्टिशनर आहेत, दे आर समवॉट स्केअर्ड फॉर यूजिंग रसौषधी. तर यांना एक संजीवनी तुम्ही आज द्यावी की त्यांनी जेणेकरून ते रसौषधींचा यूज जास्तीत जास्त आपल्या प्रॅक्टिसमध्ये करतील. मी थोडक्यात सांगतो. आम्ही सुरुवातीला 200 पानी वह्यांमध्ये केस डिटेल्स घ्यायचो. थोडं अर्थार्जन झाल्यानंतर आम्ही केस पेपर छापायची, आमची योग्यता झाल्यानंतर आम्ही केस पेपर छापायला लागलो. त्यावेळेसपासून 0001 केस पेपर आमच्याकडे ठेवलेला आहे. मध्यंतरीच्या काळात आम्हाला वाटलं नाही म्हणून आम्ही बरेचसे केस पेपर नंतर डिस्कार्ड केले. पण तो एक केस पेपरवाला जो होता त्याला सुवर्णसिंदूर दिला होता, त्याने व्हॉल्वोप्लास्टी केली होती. व्हॉल्वोप्लास्टीचं साधारण टेन्युअर 8 वर्षाचं आहे, दर 8 वर्षांनी करायला लागते. त्याला सुवर्णसिंदूर दिला. त्याच्यानंतर आता माझ्या प्रॅक्टिसचं जेवढं वय आहे जवळपास तेवढं वय 28 वर्ष त्या पेशंटला झाली असतील साधारणतः. तो पेशंट रोज सुवर्णसिंदूर खातोय, ज्याच्यामध्ये 50% पारा आहे हे आपल्याला माहिती आहे आणि त्याचे सर्व जगातले रिपोर्ट्स नॉर्मल आहेत. 8 वर्षाचा लाईफस्पॅन व्हॉल्वोप्लास्टीचा असेल, वॉल रिप्लेसमेंट परत करायला लागते. 4 वॉल त्याला एव्हाना रिप्लेस करायला लागल्या असत्या, अजून एकदाही रिप्लेस झाली नाही. कार्डिओलॉजिस्टनी विचारलं, माझं नाव घेतलं, औषधाचं नाव घेतलं, औषध बघितलं, औषधात काय बघितलं आणि पारा कसा काय ह्याच्यामध्ये घातलं ह्याच्याने सांगितलं, पण तुझे रिपोर्ट चांगले आहेत म्हणल्यानंतर काही प्रश्न नाही. सगळी भस्म आम्ही वर्षानुवर्ष लोकांना खायला घालतो. प्रेग्नन्सीमध्ये खायला घातलेली आहेत. वय वर्ष जन्माला आलेल्या आमची कॅन्सरची भारतातली स्टोरी जन्मजात कॅन्सरपासून सुरू झालेली आहे. चाइल्ड बॉर्न विथ कॅन्सर त्यांना आम्ही हे मेटल दिलेले आहे. ती मुलगी आता बाई झाली, म्हणजे तिचं इंजिनियर झाली, तिचं लग्न झालं, तिला एक मुलगी झाली आत्ता.
ती व्यवस्थित आहे. किडनी फेल्युअरच्या पेशंटला आम्ही सगळी मेटल्स देतो. लिव्हर फेल्युअरच्या पेशंटला सगळी मेटल्स देतो. सगळे जगातले पॅरामीटर्स आम्ही करतो. आम्हाला आजपर्यंत कुठलीही टॉक्सिसिटी सापडलेली नाही. एक भाग. दुसरा भाग, कदाचित तुम्ही दुसऱ्या कोणीतरी सांगितल्याने सुद्धा तुम्हाला भीती वाटू शकते की अरे ॲलोपॅथीचे डॉक्टर असं म्हणाले आणि त्याच्यामुळे हा दिसतोय तुम्हाला पेशंट ज्याची लिव्हर खराब झालेली आहे. माझं विनम्र आवाहन आहे, ज्या पेशंटची लिव्हर, आत्ता माझ्याकडे 2 पेशंट तसे चालू आहेत पुण्यातल्या दवाखान्यामध्ये, दुसऱ्या राज्यातले, ज्या पेशंटची लिव्हर आयुर्वेदीय औषधाने खराब झाली आहे असा ज्याचा कोणाचा दावा असेल त्याने तो पेशंट माझ्याकडे पाठवावा. त्या पेशंटला 100% फ्री ऑफ कॉस्ट चिकित्सा दिली जाईल. खरंच आयुर्वेदीय चिकित्सेने टॉक्सिसिटी झालेली असेल तर ती प्रांजळपणे कबुली दिली जाईल. परंतु त्या पेशंटला आयुर्वेदाची बदनामी होऊ नये म्हणून बाहेर काढण्याचे निश्चितपणे प्रयत्न केले जातील. असे 5 ते 6 पेशंट आम्ही आजपर्यंत निश्चितपणे बाहेर काढलेले आहेत. म्हणून मी मगाशी सांगताना सांगितलं, फार्मास्युटिक्सकडे दुर्लक्ष करू नका. पोळीसुद्धा तुम्ही जर कच्ची पक्की भाजलीत रोज तर पोट दुखणार आहे. त्याचा दोष शास्त्राचा नसतो, तो व्यक्तीचा असतो. आपण आपलं शास्त्र प्रामाणिकपणे पाळणं ही आपली जबाबदारी आहे. वी आर एम्बॅसेडर्स ऑफ आयुर्वेद. शॉर्टकट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड, नॉट अलाउड. जर आपण शास्त्राच्या पद्धतीने काम केलं, आयुर्वेद औषधाची टॉक्सिसिटी कालत्रही येणार नाही. आणि शेवटचंच सांगतो, मला 2 मुली आहेत. दोन्ही मुलींच्या प्रेग्नन्सीमध्ये माझ्या बायकोने 9 महिने पारा खाल्लेला आहे आणि परमेश्वराच्या कृपेने दोन्ही मुली चांगल्या आहेत. दोन्ही वैद्य झाल्यात आणि कुठेही त्यांच्या डोक्यावर परिणाम झालेला अजून दिसला नाही. आयोजकांकडून वारंवार सूचना येत आहेत, त्यामुळे इथेच थांबू आणि आजचा पॉडकास्ट सरांसोबतचा इथे खूप सुंदर जो झाला तो संपला असं जाहीर करतो आणि पुढचा कार्यक्रम घ्या. Thank you, sir. Thank you. It was truly a pleasure to be a part of this wonderful podcast session. The discussion is highly informative and thought-provoking, and we gained many valuable insights from your experiences and knowledge. We sincerely appreciate your presence and extend gratitude for making this podcast session so meaningful and inspiring. Once again, we express heartfelt gratitude. Now it is proud privilege to felicitate our respected hosts, Dr. Manish Bhoyer sir and Dr. Ashish Kate sir, as a token of respect and gratitude for their valuable presence and contribution to this program. I request Dr. Snehal Gharate ma'am and Dr. Amit Barbudde sir to felicitate our podcast host. Thank you so much, Thank doctor. you, sir. Thanks. For the next session, I hand over the mic to Dr. Thank you so Ankita much. Bobde. Thank you, sir. May I request Dr. Samiksha Sandekar madam to please come forward and felicitate our Dr. Gunjan Sandekar madam. Dr. Samiksha Sandekar madam.
Thank you, madam. Respected dignitaries on the dais, honorable judges, esteemed faculty members, and my dear participants. I am Dr. Ankita Bobre, Assistant Professor at Bhausaheb Mulak Ayurved College, Butibori, Nagpur, and your coordinator for this segment of the Ayush Samagra International Conference. Entrepreneurship is the courage to transform ideas into reality. And when women step up into this journey, they not only build business but also inspire communities and create opportunities for many others. Women entrepreneurs represent resilience, innovation, and leadership, proving that determination and vision can truly shape up the future. With this spirit of inspiration and empowerment, let us begin this session with an insightful podcast on women entrepreneurship. I would like to kindly invite Dr. Archana Deshpande Madam and Dr. Vrishali Chapekar Madam to grace on the dais for this podcast session. We extend our, we extend our warm and heartfelt welcome to you, ma'am. Let's watch a small video. Concern for practicing Vaidyas and a strong clinical vision, Shri Brahma Chaitanya Ayurvedic Private Limited began its journey. The mission was to make quality, affordable, innovative, and practically useful Ayurvedic medicines available to practitioners, especially those rare and clinically essential formulations that were difficult to access in routine practice. Founded by visionary Ayurvedic physicians Dr. Saranga Deshpande and Dr. Sriranga Chapekar, the organization is effectively guided by its dynamic directors, Dr. Archana Deshpande, Dr. Vrishali Chapekar, and Dr. Saili Joshi. Their leadership strengthens the organization and stands for empowered women entrepreneurship in Ayurveda, balancing tradition, science, and progressive management. The journey began with the manufacturing of authentic classical Ayurvedic medicines, strictly following traditional formulations and quality standards. After earning the trust of practitioners, the company moved ahead to develop evidence-based patent proprietary medicines designed by clinical insight and modern validation, bridging tradition with today's healthcare needs. Supported by a governing body and advisory panel of experienced Ayurvedic experts, the organization defined its core philosophy of the Vaidya, by the Vaidya, for the Vaidya, a vision rooted in clinical practicality, research orientation, and authentic Ayurvedic science. In 2018, the company launched a revolutionary initiative, the world's first exclusively Ayurvedic therapeutic food brand, Ayu Ahar. Designed as classical Ayurvedic diets in a convenient remedy form, Ayu Ahar addressed a key challenge for practitioners and patients, making prescribed diets more palatable, accessible, and easy to follow during and after treatment and panchakarma. Continuing its journey of innovation, in 2020, the organization introduced Samayu Wellness, a purely Ayurvedic cosmetic and wellness brand offering a wide range of therapeutic and cosmetic products rooted in classical principles. Their association in innovative Panchakarma products is transforming Panchakarma practices across Vaidyas and institutes, bringing standardization, validation, and time-efficient solutions to one of Ayurveda's most powerful therapeutic branches. Starting from Nagpur, Maharashtra, the organization has expanded across India through offline networks and its digital platform www.sbayurved.com, now serving over 5,000 Vaidyas nationwide. At the heart of its operations is a GMP certified manufacturing unit backed by export and food certifications that ensure global quality standards, safety, and consistency. Beyond its own brands, Shri Brahma Chaitanya Ayurved also supports institutions and franchisees in building their product lines through reliable and ethical contract manufacturing.
The company actively collaborates with Vaidyas, reputed Ayurveda institutes, and pharmacy colleges to promote evidence-based research in Ayurveda. Through participation in major Ayurveda events, research initiatives, and academic engagements, the organization is committed to building a stronger, scientifically validated, and globally respected Ayurvedic ecosystem. Are prepared at SDA Healthcare, and significant research and development efforts are undertaken to ensure that the medicines and formulations are not only effective but also user-friendly and palatable. From authentic classical roots to research-driven innovation. Success in a business depends on persistency, adaptability, value creation, and not just upon the luck. Shri Brahma Chaitanya Ayurved Private Limited depends on these factors, working on these factors, and one foot put forward by Dr. Sarang Deshpande, and now highway is open for the path of success. From humble beginnings in Nagpur to a nationwide network of practitioners. Our journey has always been guided by one core belief: to create authentic, evidence-based and clinically useful solutions for Vaidya and patient alike. From classical medicine to innovative Ayurveda products, we remain committed to quality, research and integrity. Together, let us strengthen Ayurveda and build a healthier future rooted in tradition and driven by evidence. Namaskar. Shri Brahma Chaitanya Ayurved Private Limited continues its journey with dedication, integrity, and a clear vision to strengthen Ayurveda, to empower Vaidyas, to serve holistic healthcare. Shri Brahma Chaitanya Ayurvedic Private Limited, of the Vaidya, by the Vaidya, for the Vaidya. May I kindly request Dr. Shubhangi Jadhav Madam and Dr. Sneha Chauhan Madam to take over the stage and host this podcast session. May I also request Dr. Abhijit Munshi sir to please come forward on the dais. Yes. Hello everyone. On behalf of organizing committee, I first of all welcome Dr. Archana Deshpande ma'am and my dear friend Dr. Vrishali. Guys, this is Ayur Samagra 2026. So far we have visited, we have seen traditional Ayurveda, technology, innovation, research, tourism, and whatnot. One part was missing, and that is business. Don't worry. The team of young women entrepreneurs is sitting in front of us. So let us learn how and when, why, etc., etc., etc. The story of Brahma Chaitanya Ayurveda Pharmaceutical. I want to mention one more thing. I have seen all these people from the inception, from the concept of Brahma Chaitanya Ayurveda, and I am very glad to share this stage with these people as our prime sponsors. So let's have a big round of applause for them. I congratulate all of you people, all of you doctors, Vaidyas, and thank you so much once again. Handing over the mic to Dr. Sneha and Dr. Shubhangi, please. नमस्कार. आपल्याला माहिती आहे की 8 मार्चला आपण इंटरनॅशनल वुमन्स डे साजरा करतो. तर याच इंटरनॅशनल वुमन्स डेचं औचित्य साधून आज आपल्याकडे आलेले आहेत डायनॅमिक अशा डॉक्टर अर्चना सारंग देशपांडे मॅडम आणि डॉक्टर वृषाली श्रीरंग छापेकर मॅडम. दोघेही आज आपल्याला लाभलेले आहेत. तर आपण आज त्यांचा प्रवास जाणून घेणार आहोत. मॅडम, आम्हाला खूप आनंद होईल तुमच्याकडनं. आमच्या आज मोठ्या संख्येमध्ये विद्यार्थिनी उपस्थित आहे आणि त्याचप्रमाणे महिला वैद्यवर्गसुद्धा इथे उपस्थित आहे. त्यांच्याकरता आपण हा खास प्रोग्राम ठेवलेला आहे. तर अर्चना मॅडम, तुमच्यासाठी पहिला प्रश्न आहे की आत्ताच आपण तुमच्याबद्दल माहिती ऐकली
की पी-एच-डी फिजिक्समध्ये पी-एच-डी असतानासुद्धा आयुर्वेदामध्ये एक महिला उद्योजिका हा प्रवास तुमचा कसा होता? खरं सांगू का डॉक्टर शुभांगी, म्हणजे सगळ्यांना हाच पहिला प्रश्न पडलेला असतो की मी फिजिक्समध्ये पी-एच-डी केलेली आहे, त्यानंतर मी इथे आयुर्वेदामध्ये कशी आले. तर सगळ्यात पहिले सांगेल की 2005 साली वैद्य सारंग देशपांडेंशी लग्न झालं, त्यामुळे जन्मगाठ बांधल्या गेली आणि त्या दिवसापासूनच आयुर्वेदासोबत हातात हात घालून प्रवास सुरू झाला. पुढे टीचिंग फील्डमध्ये आली, त्यानंतर पी-एच-डी केली. फिजिक्सचा स्वतःचाच एक असा फिजिक्स सब्जेक्ट म्हटला की सगळ्यांनाच माहिती आहे. त्याच्यात एम आहे, ऑब्झर्वेशन्स आहे, ॲनालिसिस आहे, कन्क्ल्युजन्स आहेत आणि पी-एच-डी केल्यानंतर जो एक रिसर्चचा माइंड डेव्हलप झाला, तो मला इकडे येण्यासाठी फार फायद्याचा ठरला असं मी सर्वात प्रथम सांगेन. आम्ही दोघंही सारंग आयुर्वेदाचा म्हणून आणि मी फिजिक्सची म्हणून आमचा सातत्याने डिस्कशन चालायचं, बोलणं व्हायचं. त्यानंतर 2014 साली सारंगच्या अशा डोक्यात एक कल्पना आली की आपण वैद्यांना जे गरजेचं आहे ते एक वैद्य म्हणून जर आपणच देऊ केलं तर काय करता येईल. आणि मग त्या विचारातून श्री ब्रह्मचैतन्य आयुर्वेदाची कल्पना अस्तित्वात आली 2014 साली आणि आमच्या दोघांचा एक पुन्हा वेगळा प्रवास सुरू झाला आयुर्वेदाच्या दृष्टीने. पुढे माझं पी-एच-डी कंप्लीट झालं, त्यानंतर माझं वर्कही सुरू होतं, सारंगचं त्याचं वर्क सुरू होतं. एकदा आमच्या दोघांचं असंच डिस्कशन सुरू होतं की आपण जर तू जे फिजिक्सचे रिसर्च करते आहे तर त्याच्यामध्ये आपण काही आयुर्वेदाचा यूज करून काही वेगळेपणा आणू शकतो का. तर माझं स्वतःचं पी-एच-डी झालेलं आहे ल्युमिनसन्समध्ये. ल्युमिनसन्स ही एक फील्ड आहे जी थोडक्यात अगदी सामान्य भाषेत सांगायचं झालं तर लाईट एमिटिंग डायोड्स जे आहेत, LEDs आहेत, तर त्याच्याशी रिलेटेड माझं स्वतःचं वर्क आहे पी-एच-डी. आणि मग त्याच्यामध्ये काही मटेरियल्स वापरायचे असतात. मग त्या मटेरियल्सला स्टँडर्डाइज करणं, त्याचे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात, ते जेव्हा फॉलो होतात तेव्हा ते मटेरियल आपण ॲज अ LED म्हणून यूज करू शकतो. मग त्या मटेरियलमध्ये केमिकल्स असतात, हे असतात. मग आपण कुठेतरी तिथे आयुर्वेदाचा सहभाग घेऊ शकतो का, आयुर्वेदाची मदत घेऊ शकतो का, ही कल्पना आमच्या डोक्यात त्यावेळी आली. आणि त्यावेळी आम्ही तुमच्या आयुर्वेदामध्ये जे मरीच आहे, म्हणजे आम्ही ब्लॅक पेपर याच्यावरती रिसर्च सुरू केला, प्रॅक्टिकल्स केले, एक्सपेरिमेंट्स केले. त्यानंतर माझे मेंटॉर आहेत डॉक्टर संजय ढोबळे सर म्हणून, तर त्यांनी मला बोलवलं आणि त्यांनी मला सांगितलं की तुझा हा एक्सपेरिमेंट केला त्याच्यावर पेपर नाही होऊ शकत. थोडंसं वाईट वाटलं होतं मला खरंच की आपण नवीन काहीतरी करतो आहे पण त्याच्यावर पेपर नाही होऊ शकत आहे म्हणतात आहे सर. सर म्हणाले त्याच्यावर पेपर नाही होऊ शकत, त्याच्यावरती पेटंट तुम्हाला मिळू शकतं आणि ते आमच्या दोघांचं पहिलं पेटंट आहे जे आम्ही आयुर्वेद आणि फिजिक्स मिळून घेतलेलं आहे. दोघांचंही ते पहिलं पेटंट आहे. मग त्यानंतर आम्ही थोडासा रिसर्च अजून सुरू केला की आयुर्वेदामध्ये जे तुमचं पेयायुष वगैरे आहे तर ते त्यांना मॉडर्न फॉर्ममध्ये आणण्यासाठी आम्ही दोघांनी काम सुरू केलं. आणि खरोखर सांगते म्हणजे जगातील पहिला आयुर्वेदिक आहार म्हणून आम्ही पेयायुष यांना मॉडर्न फॉर्ममध्ये आणण्यासाठी त्याचे पेटंट घेण्यासाठी आम्ही यशस्वी झालो. त्यानंतर सेकंड चाइल्डच्या बर्थनंतर थोडीशी मॅटर्निटी लीवमध्ये बऱ्याच सहभाग माझा ब्रह्मचैतन्य आयुर्वेदकडे दिला गेला. आर्थिक व्यवहार मी सांभाळले आणि त्यानंतर काही दिवसांनी असं कळायला लागलं की जसं जसं आपलं बाळ मोठं होतं आहे तसं तसं ब्रह्मचैतन्य आयुर्वेदसुद्धा मोठा व्हायला लागलेला आहे. आणि जसं बाळाला आईची गरज आहे तशी ब्रह्मचैतन्य आयुर्वेदाला सुद्धा थोडीशी माझी गरज आहे आणि त्यामुळे मी बराच वेळ इकडे द्यायला लागली. आणि मग जेव्हा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी केली तेव्हा ॲज अ डायरेक्टर म्हणून तुमच्यासमोर बसलेली आहे. खूप छान मॅडम, तुमचा प्रवास ऐकून आम्हाला खूप छान वाटलं. स्नेहा. नमस्कार सगळ्यांना. सर्वप्रथम येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या सर्व महिलांना शुभेच्छा. माझा प्रश्न वृषाली मॅडम करता आहे. मॅम, आपण उत्तम प्रॅक्टिशनर तर आहातच, पण आम्हाला हे जाणून घ्यायचं आहे की तुम्ही प्रॅक्टिशनरकडनं मॅन्युफॅक्चररकडे कशा वळल्यात? नक्कीच सांगायला आवडेल. प्रॅक्टिशनर होण्याची सुरुवातीपासूनच इच्छा होती. जेव्हा BMSला ॲडमिशन घेतली, सुरुवातीला विजन नव्हतं. पहिलं आताच्या विद्यार्थ्यांची जशी परिस्थिती आहे तशीच आमची पण होती सुरुवातीला, की आता आयुर्वेदात येऊन काय करायचं, संस्कृत शिकायचं, मराठीत बोलायचं, मराठीत पेपर लिहायचा वगैरे. पण जेव्हा चांगल्या वैद्यांशी गाठभेट झाली, चांगल्या लोकांचं मार्गदर्शन मिळायला लागलं आणि हळूहळू जाणवलं की आयुर्वेद हे इतकं प्रगत आणि इतकं पॉवरफुल शास्त्र आहे की आयुर्वेदाने आपल्याला निवडलं आहे खरं तर.
तर ह्याच्यासाठी स्वतःला भाग्यवान समजून आणखी चांगलं आपल्याला यातनं काय करता येईल, यातनं सुरुवातीला तर मी सुरुवातीपासून प्रॅक्टिशनर ओरिएंटेडच होते आणि औषधीकरणात पण इंटरेस्ट होता. त्याच्या बऱ्याचशा कार्यशाळा अटेंड केल्या आणि प्रॅक्टिसमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला खरं कळतं की वैद्याला काय लागतं. म्हणजे कंपन्या आहेत बऱ्याच अँड वी रिस्पेक्ट ऑल दॅट, कारण की सगळ्या कंपन्यांच्या औषधांमुळेच आज आयुर्वेद प्रॅक्टिशनर हा चांगल्या पद्धतीने काम करू शकतोय. पण तरी कुठेतरी एक गॅप असा असतो की कधी कधी वैद्यांना जे अपेक्षित असतं ते मार्केटमध्ये अवेलेबल नसल्यामुळे किंवा केवळ तेवढी कमतरता भासत असल्यामुळे ती ट्रीटमेंट पूर्ण होऊ शकत नाही. तर हा विषय डोक्यात घेऊन आणि सारंग सर आहेत, आमचे श्रीरंग सर आहेत, अर्चना मॅडम आहेत, या सगळ्यांच्या आमच्या टीमसोबत आम्ही आयुर्वेद ब्रह्मचैतन्य आयुर्वेद प्रायव्हेट लिमिटेड ही फर्म मध्ये आम्ही सुरुवात केली. औषधीकरण हळूहळू वैद्यांसाठी आम्ही बनवायला लागलो, स्वतःसाठी बनवायला लागलो आणि जसा जसा प्रतिसाद वैद्यांकडनं मिळत गेला, कारण की आमचं कोर हे होतं की आपल्याला ऑथेंटिसिटी कुठेही सोडायची नाही आहे. दो वी आर इनोव्हेशन बेस्ड, दो वी आर रिसर्च बेस्ड, बट वी डोंट वॉन्ट टू आपल्याला शास्त्राच्या विरोधात जाऊन काही वेगळं करायचं नाही आहे. तर शास्त्राला धरून आपल्याला नवीन इनोव्हेशन्स काय करता येतील अशा पद्धतीने आम्ही हा प्रवास सुरू केला आणि प्रॅक्टिशनर सोबत एंटरप्रिनर म्हणून पण एक छान जर्नी अनुभवता आली. जर्नी खरंच छान आहे. पुढचा प्रश्न अर्चना मॅडम तुमच्यासाठी. एक महिला उद्योजिका म्हणून तुम्ही आज आमच्या विद्यार्थ्यांना किंवा आमच्या ज्या महिला वैद्य वर्ग आहेत त्यांना तुम्ही काय मार्गदर्शन कराल? सगळ्यात पहिलं तर मी हे सांगेन की वुमन एम्पॉवर या शब्दातच सगळं आहे. स्त्री शक्ती. आपण स्त्री आहोत, त्यामुळे वुमन एंटरप्रेनर बनण्यासाठीचे जे बेसिक स्किल्स आहेत ते आपल्यात ऑलरेडी आहेत. वी आर मॅनेजर्स, गुड मॅनेजमेंट्स वी हॅव. एका वेळी आपण अनेक कामं मॅनेज करत असतो, घर मॅनेज करत असतो, बाहेरचे कामं मॅनेज करत असतो, मुलांना मॅनेज करत असतो, त्यामुळे मॅनेजमेंट आपल्यात आहेतच. मुलांसाठी, त्यांच्या अभ्यासासाठी इनोव्हेशन्स आपल्याला फार गरजेचे असतात. आपण ते करतच असतो. एक्सपेरिमेंट्स तर असंख्य करतो, खूपदा आपले एक्सपेरिमेंट सुरूच असतात. या सगळ्या बेसिक स्किल्स आपल्यासोबत आहेतच, त्या असायलाच पाहिजे. पण त्यासोबतच ॲज अ वुमन एंटरप्रेनर जेव्हा तुम्हाला सगळ्यांना समोर यायचं आहे, आपल्याला समोर यायचं आहे, तेव्हा आपल्यामध्ये एक सिस्टमॅटिकनेस पाहिजे, स्टँडर्डायझेशन पाहिजे, टाईम लिमिटेशन्स पाहिजे. त्याचबरोबर मी असं सांगेन की नुसत्या एकट्या सारंग देशपांडेमुळे किंवा एकट्या अर्चना देशपांडेमुळे काहीच होऊ शकत नाही, जोपर्यंत वृषाली, श्रीरंग किंवा इतर टीम मेंबर्स तुमच्यासोबत येत नाही तोपर्यंत तुम्ही पुढे जाऊ शकत नाही. तुमच्याच एका पॉडकास्टमध्ये मी ऐकलं की एकटा माणूस चालू शकतो, पण तुम्हाला जर फार दूरपर्यंत प्रवास करायचा असेल तर तुम्हाला टीमवर्क हे खूप जास्त आवश्यक आहे. त्यामुळे महिला म्हणून आपल्याला नवीन गोष्टी पण शिकणं खूप गरजेचं आहे. नवीन नवीन गोष्टी आत्मसात आपल्याला कराव्याच लागतील. त्याचबरोबर जेव्हा तुम्हाला एंटरप्रेनर म्हणून पुढे यायचं आहे, त्यावेळी तुमच्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन तुम्हाला थोडासा विचार करावाच लागेल. तुम्हाला एक पाऊल पुढे टाकायचंच आहे. तुम्ही एक पाऊल पुढे टाका, तुमच्यासाठी असंख्य दिवे तुमच्या रस्त्यावरती उभे आहेत. इथे माझ्यापेक्षा खूप जण अनुभवी आयुर्वेदिक फील्डमधले बसलेले आहेत, पण ज्या विशेषतः ज्या मुली आहेत किंवा ज्या विद्यार्थिनी आहेत, ज्या सध्या MD करतात आहेत, ज्या UGला आहेत, त्यांना मी असं सांगेन की म्हणजे माझा स्वतःचा अर्थात अनुभव मी शेअर करते आहे की तुम्ही ज्यावेळी एखादा प्रोजेक्ट चूज करता, तो प्रोजेक्ट चूज करताना त्या प्रोजेक्टलाच पेटंटॅबिलिटी कशी आणू शकतो याचा आपण तेव्हापासूनच विचार सुरू करावा. तुमच्या प्रोजेक्टला तुम्ही स्टँडर्डाईज कसं करू शकता, त्याचे ॲनालिसिस चांगले कसे करू शकता, त्याचे केस स्टडीज कसे चांगले करू शकता, त्याचं डॉक्युमेंटेशन कसं चांगलं तुम्हाला करता येईल, या जर गोष्टी तुम्ही सुरुवातीपासूनच विचार करायला लागल्या तर तुमच्यामध्ये ॲज अ एंटरप्रेनर म्हणून जो एक माइंडसेट डेव्हलप होतो रिसर्चचा, इनोव्हेशनचा, आणि हे तुम्हाला प्रत्येक वेळी जेव्हा तुम्ही या फील्डमध्ये एंटर व्हायचं असेल तुम्हाला, त्यावेळी या पावलोपावली तुम्हाला या गोष्टींना सामोरं जावंच लागतं. त्यामुळे आत्तापासूनच तुमच्या या प्रवासाला सुरुवात करावी असं मला मनापासून वाटतं. वृषाली मॅम, तुम्ही आपले प्रोडक्ट्स म्हणजे आपल्या ब्रह्मचैतन्याचे जे प्रोडक्ट्स आहेत ते अदर, कारण n नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल आहेत मार्केटमध्ये, मग तुम्ही याला डिफर कसं करू शकाल, म्हणजे वैद्यांनी तुमचे प्रोडक्ट्स का वापरावे हे थोडं सांगू शकाल का? नक्कीच.
ब्रह्मचैतन्य आयुर्वेदाने जी एक कास धरलेली आहे ती शास्त्रोक्त मेडिसिन तर आपण बनवतोच, शास्त्राला धरून स्ट्रिक्टली ॲडहरंट टू अवर क्लासिकल टेक्स्ट आपण ते बनवतोच, पण त्याबरोबरीने अवस्थानुरूप औषधांवर आमचा अधिक भर आहे. त्याचं कारण असं आहे की ॲलोपॅथसारखं आयुर्वेदात नाही चालत, की एक औषध अमुक व्याधीवर चालेल म्हणजे ते कुठल्याही अवस्थेत देता येईल असं नसतं. तर एक उदाहरण आपल्याला क्लेदारी म्हणून आमचं एक प्रोडक्ट आहे. तर ते विशेषतः फक्त क्लेद या अवस्थेवरच काम करणार आहे. त्रिकटू, त्रिफळा, त्रिमद अशा पद्धतीचं त्याचं कॉम्बिनेशन आहे. तर क्लेदाची अवस्था आपल्याला प्रमेहात दिसते, कुष्ठात दिसते, नेत्रगत व्याधींमध्ये दिसते, काही डायजेस्टिव्ह डिसऑर्डर्समध्ये दिसते. तर ती अवस्था ओळखणे आणि त्या त्या अवस्थेमध्ये कुठलं औषध चालेल, मग ती अवस्था संपेपर्यंत आपण ते औषध वापरायचं आणि त्याच्या बरोबरीने दोषानुरूप आणि व्याधीप्रत्यनिक चिकित्सा पण आपण करायची. असं केलं तर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट त्या डिसीजची होऊ शकते आणि अपुनर्भव पद्धतीने आपण तो व्याधी बरा करू शकतो. हे एक झालं. त्याच्याबरोबरच सगळ्या प्रकारच्या वेगवेगळ्या रेंजेस आम्ही डेव्हलप करायचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये आपली क्लासिकल बेस्ड प्रोप्रायटरी असं आपण म्हणू शकतो त्याला, की शास्त्राला धरूनच पण प्रोप्रायटरीमध्ये आम्ही प्रयोग असे केले की जसं PCOD सारखे डिसीज आहेत किंवा खूप कॉम्प्लेक्स ज्यामध्ये सिम्पटम्स असतात आणि खूप साऱ्या औषधी वापरायला लागतात, तर पेशंटसुद्धा कंटाळतो, अफोर्डेबिलिटी नसते, डॉक्टरला पण असं वाटतं की इतके 10 प्रकारचे औषधं एका वेळेला कसे लिहून द्यायचे. तर त्याचे काही चांगले कॉम्बिनेशन्स करून आपल्याला कमी डोसेज फॉर्ममध्ये ते देता येतील का. तर मग आमचे SB सीड सारखे आहेत, SB पॉज म्हणून आमचं एक आहे की जे मेनोपॉझल सिम्पटम्सवर काम करतं. त्यामध्ये मानसिक अवस्थांचा सुद्धा विचार केलेला आहे. मूड स्विंग्स वगैरे जे होतात, तर शारीरिक व्याधींबरोबर मानसिकचाही विचार केलेला आहे. तर अशा पद्धतीने इनोव्हेटिव्ह पद्धतीने आपल्याला म्हणजे वैद्य काय विचार करतोय पेशंटला ट्रीट करताना, तो ॲज अ स्वतः आम्ही वैद्य असताना तो विचार करून आम्ही आमच्या याच्यामध्ये वेगळेपणा आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचंच एक बाळ म्हणून म्हणायला हरकत नाही, आयु आहार म्हणून आपली जी फूड ब्रँड आम्ही जो सुरू केला, तो आयुर्वेदिक पथ्य संकल्पनेला धरून सुरू होणारा जगातला सगळ्यात पहिला ब्रँड आहे. त्यामध्ये आपण जसं पेशंटला संसर्जन क्रम देतो किंवा काही पथ्य देतो, ते आजच्या काळामध्ये इतक्या फास्ट लाईफमध्ये बरेचदा फॉलो होत नाही. पेशंटला आपण सांगतो की इतके पट तांदूळ घ्या, तितके पट पाणी घाला, त्याला इतका वेळ उकळा, इतकं आटवा, तितकं गाळा. दुसऱ्यांदा येतच नाहीत पेशंट. इतकं कॉम्प्लेक्स नाही त्यांना सांगता येत आपल्याला, मुद्ग यूज करून घ्या, त्यांना ते पटतं सगळं, पण इतका वेळ नसतो करायला. मग आम्ही ते इझी फॉर्ममध्ये, पेशंट फ्रेंडली फॉर्ममध्ये कसं आणता येईल त्याचा विचार केला. आणि याच धर्तीवर जसं एक्सटर्नल ॲप्लिकेशन्स आहे, कॉस्मेटिक्स आहेत, स्किन केअर प्रोडक्ट्स आहेत, त्याचंच आपण कितीही जरी विरोध केला की याची काही गरज नाही आहे, नॅचरल जे असतं ते चांगलं असतं वगैरे, पण लेप हे जे फॉर्म आहेत किंवा पूर्वीचे आपले तेलं आहेत, त्यालाच धरून त्याचाच बेस वापरून कुठेही सल्फेट, पॅराबेन्स किंवा पेट्रोकेमिकल्स जे लीडिंग ब्रँड्ससुद्धा वापरत आहेत, तर याचा बेस न वापरता आपल्याला आयुर्वेदात जे इतके उत्कृष्ट औषधं आपले आहेत, चंदन बलालाक्षादी तेलासारखे आहे, शतावरी घृत आहे, यष्टी घृत आहे, कुंकुमादी तेल आहे, असे अनेक फॉर्म्युलेशन्स आहे की ज्याचा बेस वापरून आपण खूप चांगल्या डोसेज फॉर्ममध्ये स्किन केअरमध्ये पण सोल्युशन्स प्रोव्हाइड केलेले आहेत. असे वेगवेगळे आपण ब्रँड्स यातनं डेव्हलप केलेत. मॅम आत्ता मला आठवलं की म्हणजे एक PCOD, म्हणजे मी पण प्रॅक्टिशनरच आहे, तर PCODचे भरपूर पेशंट्स आहेत सध्या, म्हणजे 10 पैकी 8 मुलींमध्ये तुम्हाला PCOD दिसेल. मग त्यांना आपण कशी ट्रीटमेंट आणि कसा आहार देऊ शकतो आपल्या ब्रह्मचैतन्य थ्रू, म्हणजे काय जसं तुम्ही आता बोलले क्लेदारी आपण त्यांच्या अवस्थानुसार देतो बरोबर, आणि एक आहार पण, कारण PCOD हा एक लाईफस्टाईल डिसऑर्डर आहे. मग तुम्ही त्याला कसं रिकमेंड कराल जर PCODची पेशंट तुमच्याकडे येते? PCODच्या पेशंटमध्ये आधी तर आपल्याला हेतू बघायला लागतील पहिली गोष्ट, आणि जर संतर्पणजन्य असतं बरेचदा 90% केसेसमध्ये, तर तेव्हा अपतर्पण आहार म्हणून आपण त्यांना रेकमेंड करू शकतो. व्याधीनुरूप चिकित्सा आपल्याकडे आहेच, दोषप्रत्यनिक, व्याधीप्रत्यनिक आपले SB सीडसारखे कॉम्बिनेशन्स आहेत किंवा कांचनारसारखे आहेत, कुबेराक्षवटी आहे, हे तर आपण वापरतोच. पण त्याच्याबरोबरीने आम्ही एक आपलं ब्रह्मसत्तू म्हणून केलेलं आहे. ते यवसत्तू जे आयुर्वेदात सांगितलं आहे घ्यायला, यव हे वृक्ष असतं आणि गुरु अपतर्पण म्हणून ते काम करतं, तर त्याचा बेस वापरून आपण सत्तू हे केलेलं आहे. तर आहार एखादा डाएट स्किप करून, एखाद्या वेळेचं जेवण स्किप करून किंवा ब्रेकफास्टच्या वेळेला आपण ते देऊन पेशंटला हेल्दी वेट मॅनेजमेंटसाठी पण त्याचा चांगला उपयोग होऊ शकतो. थँक्यू मॅम. अर्चना मॅडम, तुमच्यासाठी प्रश्न आहे
की महिला उद्योजक म्हणून कंपनी रन करताना तुम्हाला कोणकोणत्या आव्हानांना सामोरं जावं लागलं, ते एक थोडं आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी सांगा. अच्छा. एक थोडासा विनोदाचा भाग सांगते. म्हणजे विद्यार्थिनी इथे बसलेल्या आहेत, तर लग्न करताना नवरा तर नक्कीच चांगला पहा, पण त्यापेक्षाही जास्त सासू किती चांगली आहे याच्यावर थोडासा रिसर्च करा. अर्धे आव्हानं त्यातच संपून जातात. एक महिला उद्योजक म्हणून म्हणा किंवा आपण जेव्हा दाराच्या बाहेर, चौकटी बाहेर पाऊल टाकतो, तेव्हाच आपले आव्हानं खरं तर सुरू झालेले असतात. त्यातल्या त्यात जेव्हा तुम्हाला एक महिला उद्योजक व्हायचं आहे, तेव्हा पावलोपावली तुमच्याकडे आव्हानं येतच असतात. ज्यावेळी तुम्ही एक मॅन्युफॅक्चरिंगचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला जाता, तेव्हा अचानक आठवतो की अरे डिस्पॅच राहिलेला आहे वाटतं, म्हणजे ते एक आव्हान वेगळं आहे. त्या दरम्यान तुम्हाला असंख्य मॉनिटरी इश्यूजसाठीचे फोन येऊन गेलेले असतात. तुम्हाला डॉक्युमेंटेशन करायचं असतं, तुम्हाला रिसर्च करायचं असतं. कंपनी सुरू करताना तुम्हाला तुमचा लोगो डिझाईन करणं, त्याला ट्रेडमार्क करणं, या सगळ्या गोष्टींना सुद्धा तुम्हाला प्रत्येक वेळी सामोरं जावं लागतं. प्रत्येक वेळी तुम्हाला शोधकार्य सतत सुरूच ठेवावं लागतं की तुम्हाला इथून काय मिळेल, तिथे काय होईल, ते काय होईल, ते काय करता येईल. मग या सगळ्या गोष्टींमध्ये तुमच्या मदतीला तुमच्यासमोर जेव्हा खरं म्हणजे जेव्हा तुमच्यासमोर आव्हानं येतात ना, तेव्हा देवानी त्याचे उत्तरं आधीच तयार ठेवलेले असतात. तुमचे आव्हानं जेव्हा येतात, तेव्हा तुमच्यासोबत अजून काही जणं असतात की जे खरोखर तुम्हाला मदत करत असतात, ते म्हणजे तुमची ॲडवायझरी टीम. आत्ताच अभिजित सरांनी सांगितलं इथे की आमचा प्रवास त्यांनी जवळून पाहिलेला आहे. तसंच खरोखर इथे बसलेले कित्येक जण आहे की ज्यांनी आमचा तो प्रवास तिथल्यापासूनचा इथलेपर्यंत पाहिलेला आहे. त्या ॲडवायझरी टीममध्ये मी बऱ्याच जणांचे नावं घेते आहे. काही जणांचे नावं जर माझ्याकडून सुटले तर माफ करा मला. पण डॉक्टर वृषाली झाली, श्रीरंग झाले, सायली जोशी आहेत, जसे वेदप्रकाश गौकर सर आहेत, त्यानंतर प्रकाश केंद्रे सर आहेत, श्रीकांत हाडोळे सर आहेत, मोहन येंडे सर आहेत. असे बरेच ॲडवायझरी टीममधले मेंबर्स आहेत. गौरीशंकर उरकुडे सर झाले. ह्या ॲडवायझरी टीमनी आम्हाला येणाऱ्या बऱ्याच एक महिला म्हणून सुद्धा म्हणा किंवा कंपनीच्या दृष्टीने म्हणून सुद्धा जेव्हा जेव्हा आम्हाला आव्हानं आलेले आहेत, तेव्हा तेव्हा आमचं मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि आजही ते आमच्यासोबत आहेत. म्हणजे खरं तर मी हे सांगेन की ब्रह्मचैतन्याचा एक वेळ अशी होती की ब्रह्मचैतन्याचा स्टॉल घेऊ की नाही, घ्यायचा का नाही, काय करायचं, हा विचार ब्रह्मचैतन्य आयुर्वेद करत होतं. आणि आज या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनांनी येणाऱ्या आव्हानांना पुढे जात आज ब्रह्मचैतन्य या कार्यक्रमाचं को स्पॉन्सरच आहे. यातच मी म्हणेन की त्याचं ब्रह्मचैतन्याचं खरं यश आलेलं आहे. त्याचबरोबर महिला म्हणून तुम्हाला एकाच वेळी घरही सांभाळायचं असतं, तुम्हाला तुमचं स्वतःचं एज्युकेशन पण पूर्ण करायचं असतं, तुम्हाला कंपनी पण जेव्हा रन करायची असते त्यावेळी तुमच्यासोबत काम करणारी एक अजून टीम असते जी तुम्ही नसताना सुद्धा ती काम करत असते. ती टीम म्हणजे असं म्हणेन मी डॉक्टर शुभांगी की मला कधीतरी घरी अचानक काम येऊन जातं आणि मग एक आठवतं की अरे हे आपल्याला काम करायचं आहे. मग त्यावेळी आपण आपल्या टीमला सांगून देतो की हां, जसं मी सांगून देते पटकन, अनुप एवढं काम आहे तुम्ही करून घ्या. मग ही टीमसुद्धा तुमच्यासोबत असणं खूप गरजेचं आहे. तुम्हाला प्रत्येक वेळी नवीन काहीतरी शिकावंच लागतं, नवीन एक्सपेरिमेंट्स तुम्हाला करावेच लागतात, रिसर्चच्या दृष्टीने सुद्धा तुम्हाला पुढे यावंच लागतं. येणाऱ्या प्रत्येक आव्हानांसाठी तुम्हाला तयार राहावंच लागणार आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे रिस्क टेकिंग फॅक्टर्स हा येतो. कधी कुठल्याही क्षेत्रात जा आणि कंपनीमध्ये तर म्हणजे तुम्हाला ॲट अ सर्टन टाईम तुम्हाला काय प्रॉब्लेम्स येतील तुम्ही सुद्धा विचार करू शकत नाही. त्यामुळे रिस्क टेकिंग फॅक्टर हा सगळ्यांमध्ये असेलच. सरते शेवटी मी तर थोडक्यात एवढंच म्हणेन, जो ऊंचा उडने का शौक रखते है वो कभी गिरने का खौफ नहीं रखते. त्यामुळे आव्हानं घ्या आणि पुढे जा, एवढंच मी सांगेन. महिला म्हणून घाबरू नका, कधीच घाबरू नका. वृषाली मॅम, एक शेवटचा प्रश्न की आपलं व्हिजन, मिशन आणि फ्युचर काय आहे कंपनी बाबतीत? ओके. आतापर्यंत आपली कंपनी एक शास्त्रोक्त औषधी, त्यानंतर प्रोप्रायटरी मेडिसिन्स, त्यानंतर आयु आहार म्हणून आपला फूड ब्रँड, समायू वेलनेस हा आपला कॉस्मेटिक ब्रँड इथपर्यंत येऊन पोचलेली आहे. आणि याच्या बरोबरीने वी आर नॉट सेल्फ सेंट्रिक, म्हणजे फक्त आपल्यापुरता विचार करायचा, आमची कंपनी ग्रो झाली पाहिजे, आमची कंपनी मोठी झाली पाहिजे, असं नाही आहे. ब्रह्मचैतन्य ही आपली कंपनी आहे. त्यामुळे आमचं विजन असं आहे की हा एक सुंदर प्लॅटफॉर्म तयार झाला पाहिजे, होऊ घातलेल्या वैद्यांनासुद्धा
आता जे इथे विद्यार्थी बसलेले आहेत हे उद्याचे आयुर्वेदाचे पिलर्स आहेत. तर ह्यांच्यासाठी सुद्धा रिसर्चसाठी एक प्लॅटफॉर्म आपल्याला अवेलेबल करून देता येईल. त्यांचे जे रिसर्च प्रोजेक्ट्स आहेत, PhDचे प्रोजेक्ट्स आहेत, यांना आम्ही असिस्ट करतो, म्हणजे करतोच आहे. सारंग सरांचं किंवा श्रीरंग सरांचं नाव यामध्ये बऱ्याच विद्यार्थ्यांना माहिती आहे. बरेच लोक पर्सनली त्यांना अप्रोच होतात त्यांचं ड्रग डेव्हलपमेंटसाठी, प्रोटोकॉल सेटिंगसाठी, किंवा नवीन कंपन्या ज्या होऊ घातलेल्या आहेत त्यांचेसुद्धा प्रोटोकॉल सेट करून देण्यात बरीच मदत आमची होत असते. तर आमचं विजन हेच आहे की आयुर्वेदाला जर आपल्याला खरोखर ग्लोबल लेवलला न्यायचं आहे, आत्ता आपण योगेश बेंडाळे सरांचं सुद्धा लेक्चर ऐकलं, तर त्यांनी पण हेच सांगितलेलं आहे की कुठेही शॉर्टकट नाही चालत आपल्याला, आणि शॉर्टकट करायचंही नाही आहे. चांगल्या पद्धतीने जायचं, शास्त्राला धरून जायचं, रिसर्चची कास सोडायची नाही, आणि जे करायचं ते ऑथेंटिक आणि दमदार पद्धतीनेच करायचं. त्याला रिझल्ट 100% येतातच. आणि असा सर्वांगीण विचार करून वैद्यांना काय निश्चित अपेक्षित आहे याचा विचार करून आम्ही जे देण्याचा प्रयत्न करतोय, त्यामध्ये आत्ताच आपण गवकर सरांचं पण नाव ऐकलं. तर पंचकर्मामध्ये पण आम्ही हे इनोव्हेशन्स आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. हा सुद्धा आमच्या विजनचाच एक भाग आहे. पंचकर्माला स्टँडर्डाइज पद्धतीने करण्यासाठी रेडी प्रीमिक्सेस झालं, किंवा संसर्जन क्रमासाठी ज्या संसर्जन किट्स आम्ही अवेलेबल करून दिलेल्या आहे, तर ह्या सगळ्या स्टँडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्सला धरून आम्ही पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतोय, आणि हेच आमचं पुढचं विजन आहे. पुढच्या वाटचालीसाठी मॅडम तुमच्या परमिशनने आपण एक रॅपिड क्वेश्चन राऊंड घेऊया. बिझनेस और प्रॅक्टिस? प्रॅक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टंट, कारण की प्रॅक्टिसशिवाय बिझनेस शक्य नाही आहे. ओके. क्लासिकल और प्रोप्रायटरी मेडिसिन? क्लासिकल बेस प्रोप्रायटरी, त्याचा हात धरा आणि मग प्रोप्रायटरीकडे जा. ॲग्रेसिव्ह बिझनेस और इथिकल बिझनेस प्रॅक्टिस? ऑलवेज इथिकल. इथिकल असल्याशिवाय तुम्ही वरची उंची नाही गाठू शकत. बरोबर. दोषप्रत्यनिक चिकित्सा की व्याधीप्रत्यनिक चिकित्सा? मी आता जसं काही उदाहरणं दिली तसं दोषप्रत्यनिक आधी आपल्याला विचार करायला लागतो, कारण की दोषांना बॅलन्स केल्याशिवाय आपण डायरेक्टली व्याधीप्रत्यनिकवर जाऊ शकत नाही. बट ऑफकोर्स जर व्याधी तुमच्याकडे डायग्नोस्ड स्वरूपात आलेला असेल तर व्याधीप्रत्यनिक. सगळ्यांना तुमचा प्रवास जो आहे तो मला वाटतं निश्चितच प्रेरणादायी ठरलेला असेल, आणि तुमच्या या प्रवासातून आमचे विद्यार्थी नक्कीच प्रेरणा घेऊन पुढे तुमच्याप्रमाणे वुमेन एंटरप्रेनर बनतील अशी मी अपेक्षा करते. धन्यवाद मॅडम. आणि आजचा आपला हा पॉडकास्ट सेशन इथे संपला आहे असं मी जाहीर करते. थँक्यू सो मच. धन्यवाद. आम्हाला ही संधी दिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू मॅडम. आपल्याला रिसर्चची का बरं गरज आहे आणि यापुढे आपण कशा प्रकारे करू शकतो, तुम्ही खूप छान शब्दांमध्ये आम्हाला मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल खूप थँक्यू. I would like to invite Dr. Saranga Deshpande sir and Dr. Shiranga Chapekar sir to kindly join us on the stage. I would like to kindly request our host Dr. Shubhangi madam and Dr. Sneha madam to please felicitate our esteemed guest Dr. Archana Deshpande madam, Dr. Vrushali Chapekar madam, Dr. Saranga Deshpande sir and Dr. Shriranga Chapekar sir. May I kindly request Dr. Vishakha Nakshne madam and Dr. Sneha Naringe ma'am please come forward and felicitate our host Dr. Shubhangi Zadav ma'am and Dr. Sneha Chauhan ma'am.
Thank you so much, ma'am. We will meet again after the lunch break. Till then, please enjoy your time and have a delightful lunch. Thank you.